So you were able to join the group, right? Sorry, the area. You joined the group, right? The Telegram? Telegram? Yes, yes. Yeah. Okay. Just So we're doing bunch of beta testing. yeah, we are. The team is. This is Cam Really one. nice because I'm just sitting there waiting, right? For Computer. for what? Waiting for? Hmm? What are you waiting for? No, for areas, Yeah. if you're just doing strictly area trading. YouTube. Okay, let's get the link started. 2 minutes, guys. It's just the rain today. It was a heavy rain. Oh yeah. I come from Scarborough. near Orangeville, and it was bad. So it's okay. Share copy. The smaller the crowd, the better it is. I answer your questions. So we are not looking for a crowd. No. We are looking for a good information. No problem. So Why we'll. you are earlier videos like No problem. So you've seen the original presentations about what the program is about, how it all works, or do you want me to go over everything? I can. It's my job. We have seen like 2.5 videos almost. Okay. We ended the pivot points and some resistance values. So you're really here to ask technical questions, I assume, more than what the program is about. Okay. No problem. Let me just get. no idea about your program. Uh, Just, Okay. giving the introduction in the beginning. Yeah. I generally Days give. and days, Yeah. I generally get you guys the introduction at the beginning about what the trading is and how it all works. But I've said over like 1,000 hours already. So I will go straight into the give me just 2 minutes. I'm just gonna ask because a couple of guys who were supposed to be here are saying I want to watch online. No problem. Just want to make sure we are live here. Okay, this guy really wrote. Okay. Just gonna fix this camera and we are live. Sunny, can you check on YouTube if the audio is okay, if you don't mind, please? That way we don't go over May 17th. Make sure that is. As clear as it gets. Audio test, audio. Let me grab some water anyway. All right, it's. Audio is okay? There's protein bars in there. No, I don't eat protein bars, man. I'm good. It's I'm healthy. I don't know. just looking to see if they have water here. I think Fahad needs to bring some water. So audio is good? Audio is good? YouTube? So. Let's go in. No, I mean audio. Audio is okay on YouTube? I can't. Go to live. We should have,
go to our channel though. In super area. Yeah, we are live. Just double check to see audio. No problem. Go ahead. तो ये सेशन आपका पंजाबी में या उर्दू में है? सर जिस लैंग्वेज में आप पंजाबी कितनी समझ नहीं आती देखिए मोस्टली इंग्लिश में रहेगा क्योंकि हमारे पास काफ़ी लिसनर्स हैं जो और उर्दू में इट्स फाइन cam 2 and cam 4 okay good so markers I need markers. Okay, जी नंबर लिखवा दो 647-228-0694. So, name is Rafay. Welcome to our Saturday presentation, May 17, 2025. I'll skip the intro because you guys are here for the actual technical reasons. This software will help you analyze the information about market, futures, stocks, options, everything else. Like any presentation, I like to always say, anything we say is not financial advice. So some disclaimers I do have to read before I begin. They're all on superareas.com. We are not fund management. We don't take your money, invest it somewhere, give you returns. We don't manage your account, fund it, cash, CFDs, nothing like that. We're not a financial advisor. We are not going to promise you some returns. Well, at the end of the day, we are a software consulting firm that helps. We have developed some software that helps you understand the markets much better and much easier. And that's all. If you win, congratulations. If you don't, we will sit down with you to see where you're struggling, right? So since you guys are on the trial, a lot of my beginning presentation about what trading is all about and all, I've said that over and over, same time, because of no crowd in person, as well as Victoria in Canada, long weekend. So we'll go directly into the questions you have. So you're on your trial. So you have signed up. Do you have any idea what trading is? What are you trading? How? Just a little idea that what is trading and how it works. Okay. So I have not done practically like any trading in real time. No problem. So let me break it down first. What you are doing is you're selling something online 23 hours a day. And all you have to do is predict the direction of where the price is going to go. So welcome, G. First time? Yes. First time. Okay. May have to switch my script again. Have you heard any of my presentations before? No. Oh, all right. Okay. You're just in time. Normally we start at 1, but because of the rain, we start. So I was going to go straight into the thing, but I'll kind of rewind myself to. All right. Welcome to superareas.com. Every Saturday, I like to begin. First of all, this is our number, 647-228-0694. Name is Rafay, and I do the presentations in this office every Saturday. This is a support number. So what happens is this is a WhatsApp number. You send a message, 4 people will read. So that we have so this organization is since 2008.
So we have 15 employees. We have 2 offices. Second office is doing a presentation right now on the, what is it? 2601 Matheson. Matheson is having a presentation right now as well. So I do the presentations on every other Saturday this office. You have any trading experience prior? I do. In the past, I have used some platform. Okay. So you know kind of how to buy, sell, basic stuff, right? So I will, no problem, absolutely. So this is the number that's read by 4 individuals. When you send a message, somebody will read. It depends on what kind of nature the question is. My charts are not working. What is it funded? So if it's the most difficult question, then I'll reply, meaning that okay, I need to really know what my threshold is and this and that. My trade away is not working. I will come in. So every Saturday, we start our presentation with this quotation: "Sky is the beginning, not the limit," because the amount of money moves in online trading is crazy. And before we begin, we have some disclaimers for you. It's all listed on our official website, superareas.com. There are a lot of fake websites taking our name, taking our information, especially on Instagram, especially on other. And if anybody from us, superareas.com, we will never reach out to you for investment. We will never send you a message that, hey, send us some crypto. So especially on TikTok, so our handle is Super Areas Algo with an L. Somebody copied it with an I, and they're asking, "Oh, we are from Super Areas, and can you send us?" So no, we don't have an official channel where any channel we have, we don't follow anybody. We don't follow anybody on YouTube. We don't follow anybody on Instagram. So just so you know, none of our guys will reach out to you about any investment or anything like that. You have a problem, you have a concern, come into our office, come and talk to us rather than sending any money online to anybody. Just be aware. Some disclaimers, disclosures, I have to legally say that they're all available on superareas.com. What they are, we don't manage your money. Your money stays with you. We don't take your money, invest it somewhere, give you returns. We don't manage your accounts, whether they're funded accounts, whether they are evaluations, performance, pro, PA, whatever. We don't manage them. None of our employees will ever touch your account. We don't take your money again. We don't say, all right, we'll give you 10%, 5%, nothing. End of the day, if you win using our software, congratulations. If you lose, we apologize. We'll sit down with you to see what's going on. Idea is we are a software company and we help you understand the markets using our proprietary software we have built. So this company is since 2008, 2 offices, 15 employees, and 12,000 or so have graduated this program in the last 18 years. So it's not a one-man show. I'm just one person doing one presentation. Parallel, another presentation is happening at the Dixie Matheson office by our CEO, Mr. Daniel. So we have mentors, we have offices. You can come to the trading floor. Both offices are open from 9 a.m. to 2 p.m. You can come, you can talk. So we are a physical, an actual trading school. The way presentation works is, I know I started around 12 in winter, 1 o'clock in summer, but we had to delay because of heavy rain coming from Orangeville. So really, you guys came in just perfect time. So this will run around 2.5, 3, 4 hours until you have your last question in your mind. Whether small or big, I want to make sure I answer everything. Whether technical, non-technical, but we'll break the presentation into 2 segments. First is just beginners, like you said, your first time here, and I believe your first time here. Yes, welcome. You have joined the trial program most likely, and so first 60 to 90 minutes are absolutely beginning, kind of explaining you what trading is, how it works, how much money who shouldn't do trading. All of these things I like to cover in every presentation. It is going through our social media, so if your audio will get picked up my mic, but your cameras are facing me, so you don't have to worry about privacy. And anytime you have questions, we can
of course, interrupt and go for it. 45 years in the making. 12 about me specifically. I explained to you about the company. Company is very old, at least 2 decades. By 45, I'm 45 years old. This is Conestoga College, Kitchener. This is where I went to school. Year is September 6th, year is 2000. So a quarter of a century ago, this was printed. And this is me representing Canada in South Korea for a gold medal competition in software writing. So our passion, my personal passion for software goes quite a bit. 30 years of knowledge about how UI works, how databases works, how interfaces work. So now I'm dedicating my time with this company in trading software. So it's not something we just came up with it, and it's not a one-man show. So our passion about software, and one of the worst software today in your hands is TikTok. The worst software in terms of analyzing what it does for you, what it tracks for you, how it listens to you, how it observes you, how it tracks you. If you were to rate from worst to top, like Instagram falls in top 5, then you have Facebook, then you have WhatsApp. You all harmlessly just agree, but how much data that it takes from you, we as a software developer, we know what it is collecting. Google Maps, you pick it up, it says 45 minutes to work, it knows. It knows everything. Everything is digital. There's no such thing as privacy. It is just what it is. So you have to be aware that which kind of software is good for you and which kind of software is not. So why are you here? Most of you here, especially just to learn about online trading, what exactly it is that we do. And we give you the whole trading in an express format, meaning faster. Trading is a difficult business. If you were to learn it from scratch, you have to learn candles, Bollinger Bands, MACDs, moving, all of these. But our software has made it very easy for you to do the job. So what is it that we're selling? Anybody can learn. It's not something complex. Yes, 20 years ago, yes, if you didn't have some finance knowledge, some economic knowledge, things like that, like you didn't have an interest of finance, this was a difficult subject. And even today, when you go to a bank and you say, I have $20,000 in my retirement savings plan, I would like to invest, they'll bring you a bunch of documents. They'll start talking the jargon. Hey, put it into these EFTs, CFDs, mutual funds. And when you want to do the trading, they'll say, we'll put an account manager. You can do this all yourself. This is not rocket science. Takes a little bit of a learning curve, couple of months, 3 months generally, and everybody picks up what exactly are we doing, where to buy, where to sell, everybody. And you don't need a prior experience to be able to trade anything online, whether it's stocks, options, things like that. So the way we'll cover this whole presentation is about trading, discipline, behavior, not in a particular order as the thoughts come through my head. I will try to run through it. Who shouldn't do it especially, and who really can make, and you'll see some traders in the evening, part 2 around 3 or 4 o'clock, you'll meet real traders. They'll show you the real results that I joined 4 months ago, 5 months ago, 2 years ago. And these are so our biggest payout from our program is somebody who joined us 15 months ago, and like $25,000 to $50,000 US they were able to withdraw from funded accounts in April. A person who joined 5 to 6 months ago with a discipline, they $10,000. They'll come and do a presentation in the second part, and these are real traders who came, who heard us on radio or print media or social media, and they were able to come and join us. So far, any questions? Everybody's clear as I run along my presentation? Okay. If you have a question listening to online, I do have my WhatsApp open, and I will try to answer your questions as much as possible. Every one of you, by default, you are a trader already. You trade your product and services with your money. You go to a grocery store, you give them money, they give you a product. If you're an accountant or a plumber or electrician, you sell your services for money. So by definition, everybody's trader. Your job with the day of online trading is, this is a business that will change your perspective about money.
big time. Because the amount of money that moves in online trading is so massive that if somebody says I made $10,000 a day, 8,000 a day, 20,000 a day, 50,000 a day, 100,000 a day, that's not enough in terms of, because you're looking at $20 trillion, 6 trillion in just forex every day globally. China, Hong Kong, Malaysia, it moves in online trading from pocket to pocket. Nobody's losing money, by the way. Nobody is creating money. You have, let's say, 5, 6, 10 of us have, we all come in the morning and we put $100 on this table. What will happen at 5 o'clock? Somebody will walk away with 0. Somebody will walk away with 20. Somebody will walk away with 200. So money is just moving pocket. It's a zero-sum game. Zero-sum means I don't create anything. When I sit and buy something online, I'm not creating anything. Apple makes the product. Apple, he passed away, but Tim Cook, he is the one who is the behind the company running, doing the innovation, creating Macs and iPhones and Samsung, things like, and Google. They're the product. However, we just take their stock value, we move it around. So it's somebody is losing, somebody is winning. So there's not, we as a trader do not create anything. It's not something I created something. Well, price went up, I sold it, price, then I shorted it and I bought it. So whole idea is your perspective will soon change the moment you get into it. So there's one way in, there's no way out. I'm telling you that. So who shouldn't do it? I have to write a figure out here. If 100 people join 100%, only 3% will win. And I'm standing here, and this is a very, very difficult statistics to write. When you're selling a product or a service, you say, well, this is not a great thing. If 100 people join, 3% are winners. That is scary. That is scary. Why? Because 97% are becoming gamblers in this trading. So there's a very fine line between gambling and trading. And it comes down to one thing alone, that is discipline. Discipline, if you make money, you got to stop. Discipline in. So we want you to be in the top 3%. Especially people join our program and they say, all right, let's see what super areas have to offer. It's not like a magical pill that I'm going to give you and you will become the best trader in the world. Even our highest probability best traders are above 90% or 80%. Anytime you're above 60% of a trade, you're winning, you're considered a good trader. And 70 to 80%, you're actually profitable. So I know this is a scary statistic, 3%. Why do they lose? The 97% they're losing. Why? They're gambling. So this software will help you understand to trade and everything else. But why? What will happen is you will learn this software, you'll open it up, and you'll trade one day a market called Nasdaq. And Nasdaq moves 600 points, 200 points in a day, and you open it up at 9:30 and you hit the button, and the product has now gone to, the price has gone from 20,060 to 20,080 or 90, just in split of a second, maybe 30 seconds, maybe 40 seconds. And that trade gave you $600 or $400 or $500. You are not going to be the same person. I'm telling you up front. So what will happen is your perspective of money will change. You're like, oh, this is too easy. You're going to fall into the victim of over trading, revenge trading. So I like to be a person here doing a presentation, like to be very clear and very, you're joining us. It's okay, great. It helps us sell the software. But if you come out of this software still unsuccessful, you're not going to make it anywhere. I'm telling you, this is the easiest software to work with. It's ready-made. You're going to turn it on and it will give you everything. We'll give you the trading floor. We'll give you the Zoom. Every day you're connected with us. We'll give you the areas, the levels, how to buy, how to sell, where to enter. It will come down to one thing and one thing alone, your discipline. Because what will happen is
we have a target set for you at the beginning of $100 a day or $200 a day until you learn how to trade a little bit more advanced. Most people can make that in less than 30 seconds, less than 30 seconds. Then you're going to say, you're going to go back, try to trade on your own. And so we have mentors here who sit and their job is to make sure, but the problem is discipline. All of you are disciplined by force. What does that mean? You came on a 401, 410, 407, 404, any highway, and you drove from 100 to 120 kilometers an hour because that's the speed limit. However, if none of you drove with 180 or 200, why? You'll get a ticket, right? But here, so that's called discipline by force. It's all by force. We go to school by force. We go to job. Sometimes we are in a relationship with a force. Why? Because the outcomes are not that, favorable. You don't go to job. Sometimes we hate our job, but we go because it's forced upon us for certain responsibility. Here, this business, there's nobody watching you. There's nobody sitting in front of you and will slap you and say, all right, your target is done, get up and leave. So you will get to trade with the very easy with our community. However, the discipline is you have to work. So who shouldn't join this? If you're listening online, if you are impulsive person. Yeah, it's good to be impulsive, especially futures trading. But if you have to be disciplined. I keep saying this word, and you will hear this discipline word and greed word. That's the only two words you will hear. Software will take care of most of the things, but price will come to mid-band. Both colors are green. For those that haven't joined us, you have to just enter here, exit here, make your $100 or $150 and call it a day. But the more you will sit in front of this thing, the worse it will get. We have an idea. We have a thing. Do 4 to 10 trades maximum in a day. And if you're done your target within 2 trades, call it a day. So let's get you a little bit more. Trading universe is big. Just type in on Google or YouTube, I want to become a trader. You are going to get lots of millions of results. And then you pick an influencer, you pick a website. So where do you start? So our organization, when I joined this about 4 years ago, I said, I have to kind of refine the program for absolutely beginners. A person who has never traded before, how can I give them every single thing under one roof? I can give them the software, I can give them the signals, I can give them the live stream, I can give them the floor, I can give them the absolutely, like there's nothing you will need once you join our organization in terms of support. You have a question, we'll figure out an answer for you. So we will get you started with a product or a type of trading called futures trading. You can do options, you can do stock with our software. It works for crypto, it works for everything. It can analyze literally everything in the world for you. But for the beginning, we'll focus you something called futures trading. So what is your job? Your job is to trade. Trade what? Okay, you can trade gold. You can trade crude oil. You can trade natural gas. You can trade. So what is trading? Let's break that even down. So I will write a number here, $3,300, 1 ounce gold USD. So if you were to go to Costco right now, or a jewelry or a bank, and say, I want to buy gold, physical gold, and if you have 3,300 US dollars, they'll give you an ounce of gold. That's what the gold bar, whatever the price would be. So you take physical cash, you buy a physical gold, and you store it. Store it for 1 year, 2 years. Sometime you want to pass it on to your kids. So let's say 2025, you bought this, and 2028, you want to sell this. So what will happen? 2028, this price could be 5,500 or 3,200 or 1,000 or 10,000. We have no idea what the price would be.
It's like anything you trade. Price moves based on supply and demand. If there's more demand, less supply, price goes up. If there's more supply, less demand, price goes down. So this is in our world, in a physical trade, we call it, you have opened a position. You have given the Costco or jewelry a gold thing, a gold for a gold bar, and now you're waiting on holding. So this is a physical form of trading. We are going to fast forward to 2025, and especially last 5 years, things have exploded. They have brought this thing to your phone now. You can sit anywhere in the world. You just need internet. You need digital. Everything is digital. Again, 20 years ago, my experience is there's a company called 1688.hk. Some of you may know this as Alibaba.com, where they have Chinese wholesalers, right? So they went public. So 20 years ago, 2000, and me and my friend, we took 30,000. We wanted to invest in this company because they had an IPO, so initial public offering, and the stock, and they were not available on US. So we flew to Hong Kong, opened up an account, put in 30,000 US dollars cash with a couple of us, and then we bought the stock price. And that's how the trading was done. These days, with internet, with faster computers, with everything else, you don't need physically to do anything. It's all done through your phone, through your internet. So what are we doing in futures trading? We're taking gold and we are buying and selling gold contract digitally. So let's say the gold symbol is GC and the price is 3,300. Markets are now open 23 hours a day. You can sit in front of this damn thing and play 23 hours a day. So that will go into gambling because you're not here to play. You're here to. So the some terms why they're calling it betting, gambling, all these things. But your job is, so market opens, by the way, 6 p.m. So next day, 5 p.m. So Sunday evening, market will open officially, and it will close Monday at 5 p.m. Then it will close for 1 hour and open at 6. So market is open 5 days from 6 p.m. to 5 p.m. That's one trading day in our trading futures cycle. So what is your job? Gold is trading as 3,300. You just need to figure out if the gold price and supply and demand is going up or down. That's it. So that's what futures trading is. You don't need to, the best part about why I love futures trading, you don't need $3,300 to buy anything. When you're buying physical gold, you need that much money. But all you're doing is you are doing something called flipping a contract. You bought something, S&P, gold, natural gas, crude oil, forex, it doesn't matter. And then a little bit later, 5 minutes later, 10 seconds later, 1 hour later, as long as you close your position by 5 o'clock, this is what day trading is. So you can sit and hold a position for as long as 23 hours. That's it. So at 5 o'clock, every position gets closed, whether you're in profit, whether you're in loss, done. But you can close as early as 5 seconds. 10 seconds, 15 seconds. So what is the job? 3,300 gold is trading. You want to see if the gold, what is our software predicting? Live. It's happening instantaneously. It is saying gold is going down. Okay, you sell. If it's saying gold is going up, you buy. So this is what you will be doing for remaining of your career in trading. Where will you lose? You made a prediction, computer was right, instantly you made $300 or $200 or $50, doesn't matter. You go back into another trade and volume wasn't there because the price is changing drastically fast, but our computers are very good algorithm that will predict what is coming ahead based on volume and everything else. So that's it. So you just sit and you predict
buying. You're not doing options. You're not doing stocks. You're not doing crypto. You're not doing any of this. CFDs, because at the beginning, yes, once you know futures, you upgrade yourself. You know, all right, I got some money because in our industry, we call it the trading is rich man's hobby. Now that's a scary thought itself. That if it's so, you need a lot of money just as a hobby. So you have a rich person in the United States. You know what they say? Oh, well, I have some $100,000 invested into stocks. So they play as a hobby. But how do you make the 300,000 or 100,000 or 50,000, 60,000? Now we'll touch a little bit more on the conditions in Canada slightly. The world itself is going through some of the changes we haven't seen ever. Like my dad hasn't seen it if my grandfather was alive. It's not the same norms anymore. Norms are, my dad was a forklift engineer in Middle East. He spent about 20, 25 years there, right? Growing up at a young age, went there. Then he migrated to Canada and took maybe 2 jobs. So from 1996 to all the way up, just changed his job twice. Today, the world are rapidly changing. You can lose your job in 15 days, 20 days, doesn't matter. So back then, the thing was you went to school, you got a good degree, then you started a program, and then you kind of ended your whole career. I went to school for computer programming. I switched maybe 10 companies. You got a contract here, then the company, like TD, look how many they laid off. Microsoft is laying, every time there's an earning every quarter, they lay off a bunch of people just to show investors that they don't have so much expense. So the world is changing and you want to become rich. That's normally everybody wants to really make their financial independence, right? Regrettably saying, there's no easy way than trading. It is only good for 3%, but those who make it 3% are making a killing. Now let's analyze and let's sit down and make a financial goal. What is the goal? Let's say you want to save. I'm always the most realistic person when it comes to number, not going to give you fancy rosy pictures and say, all right, an average person in Canada, if you are not earning right now in Toronto $5,000, you are below poverty line. That is what the statistics say. The rent, the food, the insurance, the groceries, everything else. If you're not taking $5,000 net, you are really having a hard time. This is just the way reality is of living in Toronto. Meaning, whether you have 1 income, 2 income, doesn't matter. If that means 60, this is, by the way, net. $60,000 Canadian you need every year to live in Toronto. If you go maybe Waterloo, Cambridge, Guelph, Ajax, bring it down to 4,000, 45. It's not drastically. Inflation is coming, tariffs are coming. You need money. So how do you add money to your existing? So unless you are a very highly professional, you're a lawyer, you're an engineer, you're a doctor, you are very highly skilled electrician, plumbers, you can make it. But otherwise, for normal everyday people who are just having 9-to-5 jobs and they're struggling to make the ends meet, saving $25,000 a year, it is difficult. In my opinion, that's what I see. I see traders every day, real estate industries having, especially logistics, when the people who were driving trucks to US and Canada back, they're struggling. So let's say your goal is, I would like to save $25,000 in a year. So 2026 comes around May. Of course, you have a job. Let's say, if you have all these expenses and jobs, how much maybe you can put together? An average person can around save about $600 to $1,000 a month if they really put it, their budgeting properly. Problem is that even a graduate today in Toronto, let's say you graduate from York, you get your first job and your job is
let's say $60,000 a year. Trudeau is going to take 10 to 15. You're left with 45. So now you want to start a career, a family, whatever, right? So it is difficult to live in Toronto. So what is the next step you can do to increase your income? You can always work more. Of course, you have 24 hours. It's a finite amount of time. People who drive Uber, I think is about $30 to $35 an hour, average. Average. So some days are good, some days are less, depending on. So I'll put it in at $30. A forklift operator is about $35. That's what their jobs, their real jobs are out there. Otherwise, everything is at minimum wage unless you qualify higher. So why do I have to give you all these numbers? Because it will put you in perspective. There's difficult situations out there. So second is you can go and add more hours to your existing 24. Let's say you work 8 hours, you can get a part-time job, an extra somewhere else. Second thing is you can pick up a skill that'll give you something else on the side. Third is you can start a business. It requires some capital. I've done numerous types of business. Some failed, some are highly successful. Somebody asked me to import rice from back home. I lost $165,000 because the guy didn't know our packaging didn't have French on it. Packaging didn't have. So, starting a business is a risky thing. You think opening a restaurant is easy? It is the most difficult. I know people who enter grocery stores, starts at around $100,000, convenience store, $100,000. Even a barber shop, if you take a franchise of a first choice, I think anywhere from $40,000 to $60,000, you have to pay the franchise fee. So starting a business requires some capital, right? So that's your risk too. Will the customers come? I need a marketing budget, all of that. So starting a business, it's a good thing, but it takes a bit of an inherent risk to make sure. And in Canada, small businesses fail the most because everybody goes in with the hopes and dreams. So third thing is you can buy a good franchise, but that requires, like, if you want to buy Tim Hortons, McDonald's, you don't have $1 million. So what is it that, so why does this presentation always excites me? Because we have different mentors. Because I would like to, when I got into this and I was doing well, I had a lot of friends say, you know what, I am doing a rough job, tough job, construction. How can I make my life a little bit easier? I said, hey, get into trading, get into trading, get into trading. I'll give you a real example. 3-4 weeks ago, my brother came from Amsterdam, Holland. He's a DHL driver, so earns good living, decent living. Why? Meaning that he takes home maybe about 5,000 to 7,000 euros. Let's say, put a figure. He's got a family, he's got a kid. He lives in Amsterdam, Holland. And he said, you know what? It's end of the day, it's struggling. It is struggling, meaning that, all right, we have to plan a vacation. And I see you flying all over the place, this and that. So how do you have all these things? So I said, come, I will put you in trading. And I'll put a plan together for you. So we came up with a plan. I would like to save $25,000 by end of next year. So, but I explained them this, hey, 100 people join, 3 people will make it, 97 will quit, or they will fall because of discipline. So all you have to do is, this is the only business that can give you the amount of, the freedom. I'm not giving you a 649 lotto dream. You're going to have to work hard. It takes discipline. It takes learning curve is steep sometimes. Some things you have to come over and over. But we will make sure that every damn thing possible will do in our power to make sure you are successful, right? So wherever you're struggling, when you join our program, we have mentorship, we have in person, we have online, we have classes. We will make sure it's you that you have to eventually decide, hey, this is not working out for you. Or, because remember, not everything is built for everybody, right? It's natural. If you find yourself impulsive or disciplined, I rather do something else. I would rather do affiliate marketing. You can open up a TikTok channel. It's great. Just do cooking videos. I have an uncle, cousin,
doctor in UK, and I just opened up a TikTok channel for him where I just say, can you make 30-second clips about herbals? And then he got like 2,000-3,000 followers, right? And it's okay. It's not a big deal. Some people like to shop, some like clothing, like my daughter likes to draw. I said, when you grow up, just make a channel, YouTube channel. Maybe you'll get your followers, and you never know, right? So these days online, this is just one form of doing business. Cooking videos, dancing videos, like, TV shows, vlogging. Open up a TikTok channel, put a camera in front of you. Don't be shy, start talking. You should go and see my first videos. I'm from 2023. I'm not a camera person. I'm very, very shy. I'm very reserved, introvert. I don't speak to many people. I no, but you have to understand, I trained myself to it, right? I'm the type of person can go to movies alone, sit down alone, watch the whole movie alone. I don't like to socialize so much, but part of my job is when I got hired by these guys and I became part of In Lifetime, I said, hey, they said, hey, you got to change who you are. So my job now is to kind of coach people into trading. So trading is easy. Software is going to help you. Your job is sit down 6 p.m. to 5 o'clock, 90 minutes a day, 60 minutes a day. And your target is $100 to $200 a day, and you'll be able to, trade this. Now I'll stop here. Let's do some questions and to see how much money it requires. Anything, doesn't matter. Okay, the software is exactly like this. So you guys signed up for the trial, right? You have the videos, right? The team installed a software called Ninja Trader for you, right? They did? That's the software, by the way. So let me quickly show you. This is what the software is. So it's predicting. So if you want to learn to trade, you type on Google, I want to learn to trade. Majority of them will take you to, what is your number? 647-228-0694. You can get it from superareas.com. So what we did was we built a piece of software that you turn it on and it's ready made for you. There are 15 to 25 different mathematical calculations happening, by the way. So none of this I invented or the company invented. This is like we made a calculator. We didn't invent math. So this is math, by the way. It's very precise, like, moving averages. So this is all math. Math is not even my favorite subject, but as a computer science, you need to know math, right? So there's some triggers, lines, things, how all we have to do is predict what is happening in the market based on supply, demand, news, rumors, earnings. And then we have to say, all right, this is a good time to buy or good time to sell. That is all this software is doing all day long, 23 hours a day, because within trading, there are 10 or so different things that you have to figure out. You have to know how many people are in the market. Are they buying right now? Are they selling? It's like going to an auction and then you go pick up and say, what is the, and even if you want to buy property, how do you know that somebody has listed for $1 million? Is it a good price? So you do a data analysis. You look at the survey, you bring a real estate agent, says appraisal of the property, then you look at the neighborhood, then you look at so many mathematical calculations, then say, all right, this value, this property is worth that much. It's good price, or no, it is overpriced, or it is underpriced. Same thing. You want to buy a car, you want to buy a phone, you want to buy, if you go to I remember milk, like the 3% milk. Going with my mom, it used to be around $3.49. I remember that time. I think it's $9, maybe around $7. You can pick up $7.50. So it has doubled, right? So
right now we feel inflation. In the minimum wage, when we came to Canada in 1996, minimum wage was $5.75 back then. Now it is $20. So prices have gone. So every single thing requires a bit of a finance. Same idea. This is a price of S&P 500. It is telling you this is a good time to buy, because that's where the software comes in. That's where the whole analysis. So what we have built for you is a tool that helps you figure out if the price is okay to buy, price is okay to sell. And if you are in the right direction, meaning you can, the best part about futures is you can even sell it and make money. The price doesn't have to necessarily go up. You can go down. If you sell here and if you buy here, you are done within your $50 to $100 in 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 90 minutes maximum a day. If you're able to come to our office, I highly encourage it. Sit down with real traders. Sunny, the guy who walked in, got a payout. Lots of people in here will teach you fundamentals, right? So take a bit of a learning curve. So this is the software. So I know this is technical. Relative strength index, Bollinger Band, moving average, exponential moving averages, higher high, lower lows, trigger lines, small and large, value areas, current, I know, quite a few. So if you were to just pick one topic, let me give you a topic of divergence. That's a complicated, you need like PhD people doctors have written books on it, how trading divergence works, or 250-day moving averages work. So that's great for technical people, right? So what we wanted to build for you is an easy to use platform, a person. What is my goal? My goal is a person I can take who has never done trading ever, and I can show them how to buy, how to sell in 3 months, and they can make $2,000 to $3,000 a month, which is not possible anywhere else. That's our initial goal is. Once you know how to make $2,000 to $3,000, which means $100 to $200 a day, it is exponential. So trading success, by the way, is not linear. It doesn't go like this. This is a linear curve. You have to go like this, because that $100 a day can turn into $10,000 a day with no more difficulty. So if you can truly understand the power of $100, that how much $100, you will come maybe around 3:30. Somebody will stand here or 4 o'clock. $100 a day can earn him $500 a day. $100 a day for somebody, it's just number of accounts, number of possibility. And here's the benefit these days. We didn't have this luxury 4 years ago, at least 4 years ago. You wanted to get into futures, I would say don't. You gotta maybe go into stocks or go into options. Don't go into futures because it's a very fast moving market. It can really destroy you. I've seen people getting highly addicted. I will tell you the negatives about this too. You will get addicted to this. You will like to sit in front of this damn thing 20 hours a day, 30. Yeah, for learning is okay, but for trading, this is going to make sure that you don't get addicted to it. You bought it here, you got out, or you bought it here, you got out. That's your $100. That's how simple it is. If you at the beginning you're struggling, please come to the office. Yes. We expect that software is going to give us the exact values where we should take the position. 100%. 100. So no single software, no single trader on this planet Earth is going to be 100%. All right. So let's write down trade accuracy, 100%. We have our system for 18 years, right? We have developed some percentage. So every trader starts with 50%. You can bring me literally a cat, and I can put a buy column and a sell column, and a cat can just press a button. That cat is 50% right. Because the price will do one of two things. It will either go up or down. There's no third thing. So every single person or a
anything. If they can, even a robot, you can put it and just says buy or sell, is right 50% of the time. It's like flipping a coin. So what our job is to turn this 50 to 63 to all the way to 73%. So if you were taking a trade and you're positive 7 out of 10, 8 out of 10, you are a really good trader. So that's where our job is. So our prediction of this software, we have broken down some things. We have 14 ways for you to use this software. Not 1, not 2, not 3, every single thing. You pick your favorite method. It's like going to Baskin Robbins and picking, I like pistachio almonds. That's my favorite. My kid likes like chocolate, likes vanilla. Some users like to take bad trade. Go up 2 points, go down 2 points. Some guys take divergence trade. Some take area trade. Some take overbought, oversold. Yes. So what's the success rate of That it's above 90. Above 90. So, but I will have to break it to in a different, let me answer it slightly different. How do you measure success of something? An experiment. Scientifically speaking, you want to get an outcome of a result, right? So you have to apply that sample data for at least for a month or 2 months. That, okay, I'm going to test something for a month minimum. So we call it that you have to test our software for at least a month. And then pick, it's not like you're going to test one thing today and tomorrow you're going to change the variables. And then the day after you will change the variables. And the day after, meaning, what does that mean? Today you tested area. Great, it worked. But tomorrow you're testing mid-band. But the day after you're testing overbought, oversold. You have to pick one thing and test it for a month. So let me give you example. When I said 90%, this is a sheet that we share with you, but this is a data. This sheet is for Nasdaq. You can do it for, this is our computer model predicting. So this goes back as June right now, but June of last year, almost a year into it. Let me change this slightly. Okay. This is Friday, May 16th. Now we have 18 years of data. Not 1, not 2, not 3, not 4, 10, 20, 18 years of data. So we have some experience. So our software is an algorithm. What is an algorithm? Is a bunch of computer instructions that calculate what could happen next. So to define algorithm in the easiest way, a trading algorithm is, it's doing some calculations for you and it's giving you some predictions. So if you open up your phone app right now and go to weather, and you will see next week's weather. Next Saturday, you can plan your day based on that. How do they come up with that number? They're not God, right? So it's a software that looks at historical data. Says, okay, what was the weather May, let's say 25th last year, a year ago, 10 years ago, 40 years ago. Then they look at some current environment. How's the wind? How's the pressure? Is there any typhoon in there? All of these things, then they say prediction. All right, this is the highest weather could go, 18 degrees Celsius. Lowest, 5 degrees. So we plan our life blindly based on that. So you look at GPS. You want to go from here to Niagara Falls, and you say, all right, I'll put in the thing. It does some algorithm, and it says, you know, the fastest way is 410, 407, like QEW, Niagara Falls. But it doesn't know if there's going to be an accident on QEW.
Doesn't know yet because it's not been reported. So they have a bunch of computer software that's doing the calculation and say, all right, you may want to reroute because we have an accident, there's a delay. All of these things are computer-based algorithms that are running your life. Every single day, your car is based on algorithm. If you today you're working without an algorithm in your life, your TikTok is an algorithm because what it does, it looks at what do you watch. Do you like to watch cat videos, mouse videos, cricket videos, wrestling videos, cooking videos? I like to watch on my bored time the outdoor camping videos. The person goes in wilderness, sits in Alaska, and especially the Outdoor Boys channel. It's really good on and as you scroll and you spend, because attention span has gone so low of humans, they've gone down to less than 10 seconds. If you don't stick on a video for less than, they think, hey, this video is, we're not going to recommend you similar content. So if you stick on, some days I like to watch motorcycle videos, all of these. So your algorithm is learning. It says, all right, this person sits on this video and then they clicked on it, they liked it, they chatted about it, they forwarded it to Facebook algorithm, TikTok algorithm, GPS algorithm, your car has an algorithm, everything. Because what is it? You sit down and all these cars now can adjust based the mood on you, right? They can see that, hey, are you even looking? So same thing. Our software predicts something. So when I say 90%, for the last 18 years, our software has predicted. Every single day it predicts. And we are so confident that we don't change our prediction. That's his one. A lot of people sit inside a signals group. They will change as the market is changing. We are the one company that sits at 9 o'clock in the morning and says, all right, this is what our prediction is. Could be wrong. It's not 100%. But we are one company that will never change its prediction until it's either done, failed, or passed. So how do you then calculate? These predictions are 90% accurate. So on Friday, this is Nasdaq. I can open up ES, S&P 500. On ES, our computer model predicted ES and NQ. These are the top two trading things. Our computer said if the price goes to 59.70 to 59.76 or 21,520 to 21,500. So 490, sorry. We got to give it some buffer. This is no human did this, by the way. No, it's a mathematical function. It looks at data, it looks at market, and it prints out some numbers. So it's an AI-based algorithm. What we did was we looked at it, and some human kind of verified it. All right, okay. So we have 4 data analysts on our team. They look at, all right, what did the prediction came for today? So ES, we sat down. So this got printed on our computer. All of you who will become our member, this got printed on everybody's screen around 9 a.m. These numbers the market came to these numbers and did exactly what we had said it would happen. So exactly, let's take a look at this chart now of okay. If you're watching this chart, somebody who's at home, price went to 70 and it fell down 3 points. 1 point is $50, by the way. If you sold at 70, because computer predicted that if the price of S&P 500, it's rising. So this is a weather. You can say today is high weather. It goes. Computer has said at this level, please don't buy. Or
don't, from here, the trend will reverse. The price is going to go down. So if you sold something at 76, you made at least $150 or 15 times, depending on your lot size. And this is minimum. And then if you sold, if price went back up to 76 and it fell down to 43. So every single day for the last 18 years, unless there's a holiday, our computer model predicts these values and says, so now we are making it one step ahead, starting next week. Because this is one way, by the way, to trade. We teach you all 14 ways. Right now, you're just learning the mid-band way. What is the background color? Bollinger Band, all these things. We have to teach you because we're not just going to give you, say, hey, just take this, because I don't want to offer one thing. I want to open everything up for you, is where these numbers come from and how, so you're not dependent on us all the time. Say, hey, where are my numbers? So this is one way, and this is 90% accurate. So now let's go back to that sheet again. So of the Nasdaq sheet, I have users who now strictly deal with these. हेलो सर, फ्राइडे नंबर ले लिया था? 70 लिया था फ्राइडे को, एरिया ले लिया था? हाँ जी। ओके, 70 लिया, 76? ये अच्छा, नहीं, बड़ी एक्यूरेट आई था ना, बिल्कुल पिन पॉइंट, और उससे पिछले दिन 15 वाली. So where is my mouse? All right, so computer said Nasdaq, if price goes to 21,009, it's not 100% to pinpoint to exact pip. It gives you a range, and range is pretty narrow. That if the price goes from 490 to 520, I will bounce down. And if you just shorted there 10, 20, 30, 40, 50 points and you were done. Person sitting beside you will be doing a presentation starting next week or the week after. He does Nasdaq. You have so many flavors and so many combinations and permutation. So we have experts who do gold, who do Nasdaq, who do ES, who do everything. So you're not going to be left behind. The only reason I tell you of this, you will quit where you will turn trading into gambling. And then we have an open challenge for 12,000 or so members who've been with us since 2008. If you have left this, or you're not part of the trading, we can sit down and we can figure out, is this the software causing the problem or your personal behavior causing the problem? If we beg you, Murtaz will sit in front of you and say, this is the mid-band number. And at the beginning, you're on the training wheels, right? So he sits here. We have a talented person, hundreds of thousands of dollars in payouts. In like fast track trading alone, he got 35,000, but the company went bankrupt, took everybody's money, the funded company. He didn't lose money, just lost time. Then we have so many, so we have Happy, we have myself. So it's a full team that'll help you. So here, any more questions on this topic of areas or levels or anything like that? So what we are now making a big milestone starting next week. Some of you are part of our Telegram group that we have. So I joined this company 3.5, 4 years ago, and I kind of had to do it. So a lot of things, we are taking it to one step further, because as the technology is evolving, the old style of trading is changing. People don't have time. They want to sit and they're like, you know what? I want to relax my life, right? So we started with printed handwritten numbers, to emails, to WhatsApp, to Telegram, to now plotting on the charts, all the way trading views coming very soon. So we are on a exponential growth in terms of making this the easiest. So what will happen maybe within a couple of weeks? But this is for advanced users, not for beginners. Beginners still should learn what an RSI is. What is a moving average? What is Bollinger Band?
What is mid-band? What is a large triggers? What is a small trigger? What is a so you want to make sure your foundation is built strong. Otherwise, yes, making money, you can come and we can start getting you into the money stage in day 3. You won't learn anything, but I want to make sure that you learn the basics first. You ask a question. What does SRES stands for? Swing, retrace, extension. What is a higher high, higher low? So I'll write a few things. So you have to understand, I'm going to write some users will be able to read, some not. This, if you cannot read this, it doesn't make you a less intelligent person. All that means is you don't know the language. This is my name written in my language in Urdu, says Abdul Rafay, right? So the idea is, if you can't read it, it's okay not, but I have to teach you that. सर उस पे एक दुआ प्रेयर लिखी हुई है कि उसको अरबी में कहते हैं रब्बे ज़िदनी इल्मा, वो लिखी हुई है. तो हम ये चाहते हैं कि हमारे ट्रेडर्स के, ये एक प्रेयर है, इसमें उसमें लिखा था कि हमारे नॉलेज में इजाफा हो. जो आप लोगों की कास्ट है, सिख यही होता है ना, सीखने वाला, उसकी डेफिनेशन तो सिख की यही है कि सीखना है. तो हम भी यही दुआ करते हैं कि हमारे इल्म में, क्योंकि पर्सन नेवर स्टॉप्स लर्निंग, राइट? सो हमारा वो रखी हुई है सर कि यार new knowledge comes in because we don't know what will happen in tomorrow, so नया knowledge लेना है ना. So same idea, a person who is learning it. So the biggest fear everybody has is a fear of failing. If I try this, I think the biggest fear is not trying. Yes, you can fail. And like when you start to ride a bike, when you start to try developing, if you are not going to attempt it because this feels a little scary, this feels a little risky, you don't have to worry too much about money. You can do funded account as low as $15. You don't have to invest your own money, because the biggest fear everybody has in trading prior to at least 4 years ago is I'm going to lose money. Okay, no problem. So last 2025, we have shrunk that fear down to $15. Sometime it's $19, maximum $200, right? So you don't have this fear, I'm going to lose 5,000, 10,000, 20,000, 50. No, this is an easy way in. You come in, you take a look, you pick a funded exam, you pass with the software, and companies will hire you. Hire you as a contractor. Their job is they give you capital, they make money, you make money, simple as that. So that's how the whole, so you don't have to worry about that. $15 is a good option. Is when you take a Bullnox exam, they give you a capital of, this program is not $15, by the way. This is, that's a funded account, so this program costs a little bit more than this. So it's a monthly subscription, but a Bullnox exam is $15 in order to pass. So funds is not an issue. It's just for you to kind of get into it, start learning the ropes, start understanding basic things. So starting next week, the moment our staff is trained, your whole sign-up process is done, authentication process is, what we are doing is, these numbers sometimes take a day to come, 24 hours. So Monday, we'll have new numbers. Tuesday, new numbers. Wednesday, new numbers. So these numbers can come 6 o'clock in the morning, 4 p.m. in the evening, 9 p.m. in, sometime you're having food, meal, going out with your kid at a movie theater. These numbers can show up, meaning that's where the price can move. So gold can happen 4 o'clock in the morning because Euro session is fast. Sometime, so there's 3 times where this could happen: 8 a.m. to 11 a.m., 2 p.m. to 4 p.m., or 3 a.m. to 6 a.m. This is where the majority of the trading globally is happening, right? So you have to understand, nobody sits in front of a computer 23 hours a day. But somebody can for a job, right? Not one person, 3 people, 4 people, 5 people. Especially we looked at our options back home, somewhere in Philippines.
two, four, $500 a month, it's good for them. But I can have some humans sitting there and send out alerts. Alerts mean, hey guys, please check out, heads up, expected highs coming on ES. That's your signal. That's your alert. Your phone is going to open. You're going to say, all right, what's the current price? Because otherwise you're glued to it. हर 5 मिनट बाद देख रहे हैं यार आ गई कि नहीं प्राइस, आ गई कि नहीं, या तो आप ऑर्डर लगा के छोड़ देना, लेकिन फिर भी घबराहट होती है यार कि इसको अनअटेंडेड ना कर दें, तो मोस्ट पीपल ऑर्डर लगाते हैं करीब करीब. अब नैस्डैक की प्राइस आई 490 से 520 के दरमियान. पता कहाँ से प्राइस बाउंस की है? 506 से. 490 से पैसे बने, 500 से पैसे बने. जिसने 520 पे बैठा उसके नहीं बने क्योंकि रेंज जरा ऊपर थी. But if you sit down, computer said, so I believe Friday's high was 500 and let me double check to make sure. What's the highest for Friday? 506 or yeah, 1 second. For Nasdaq, 512, 512. So computer predicted from 490 to 512 or 520, price will bounce from here. When it drops to, by the way, look at this number, 270 to 330. If it drops, at what point it's a good purchase? So imagine if you have if you're into real estate and you're looking for a property, and there's a property, but there's a property, and if it comes to, you get an alert, hey, this is the good best time to buy because the price has fallen so much. But the benefit of this property belongs to one person. Anybody can trade at any time. It's not it's limited to one particular option. So I यार कहाँ तक गिरी थी? आपने S1 लिया था ना? नहीं, जब S1 आप हाँ नहीं कल का 330 यहाँ कहाँ गिरी थी? 320, यानी कि एरिया के अंदर से गई. ठीक है, मैं S2 का बैठा था, मैं नैस्डैक जो है ना, मैं थोड़ा, पता है क्यों? ये गैप बहुत कम था. अच्छा, उसने S1 लिख दिया जी, डन फॉर द डे. तो इतना आसान होता है. So when you learn, so the learning curve is steep, by the way, don't get me wrong. I'm not going to say this is going to be as walk in the park and you come in. Yes, so there's two ways to approach this. I am here to $100 a day. Then you join a different thing, meaning you come here, you sit down with Murtaz and you take $100 and leave. That's the second thing. Or you can learn, hey, this is my mid band, this is my Bollinger Band, this is how you read the, so in June you have interest rate, you have CPI, you have PPI, you have unemployment. There are, at least you have to hear 20 to 30 hours of videos. How to use Ninja, what is a position trading, where am I gonna, if my trade closes, how does take profit work? All of these things generally register in your mind within 90 days. If I ask you what is a threshold, he can answer. But if I ask him 3 months ago, like, that doesn't make it any less. It's like this language. So the words go like this in Daniel. So the way our program works is you will join the trial for 14 days. And in 14 days, you have to assess yourself. Am I going to do this or not? And then you say, all right, I feel like this organization, for the amount of money they charge, is giving me enough value for my dollar. Because I know we came up with this number. I'll tell you how much we charge subscription, right? And we looked at everything and we put a plan together that this has to be affordable for beginners in terms of, yes, we have accounts that Daniel looks after in terms of giving them personal opinion, not financial advice, but some people are trading natural gas. They have $200,000 account, gold, like crude oil, all of these. And one guy came in, single trade $76,000 US on the original account. 20 lot Nasdaq फेंके हुए थे. Price गिरी or like so. And but we don't get impressed anymore. Yes, made $100, good. To somebody, 100 is great, right? But to somebody, $1 million is not enough, right? So that's just a perspective that you set for yourself, right?
To us, beginning user, $100 to $200 is going to be a good enough to get you where you are. 10 to 12,000 a month is good enough. So once you do these areas, you'll open up thing. You're sitting anywhere in the world. Alert comes to you, like time to buy, time to sell. जी सर, कोई क्वेश्चन? क्या हो गया टेलीग्राम शुरू कर दिया? हाँ, नहीं वो सर, फाइनली हमें उसमें सबसे मुश्किल बात पता क्या थी? इसको हमने 1 साल से लगे हुए हैं। पहले हमने खुद अपनी ऐप लिखी superareas.net की, ठीक है, पूरी ऐप लिखी उसे, क्योंकि उससे पिछला एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं गया था। हुआ ये कि हमने डिसाइड किया कि हाउ डू वी सेंड द सिग्नल्स, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमने बंदों को डाला, 6, 7, 15 बहुत हो गए। और व्हाट्सएप में प्राइवेसी नहीं है ग्रुप के अंदर, स्पेशली ग्रुप्स के अंदर हर एक बंदा एक दूसरे का नाम और ईमेल और निकल आता है, ठीक है। ये एक व्हाट्सएप का मसला है। और फिर उसमें लोगों ने आपस में एक दूसरे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा भाई हम मिल के करते हैं, नुकसान हो गया, ये डंप कर दिया। फिर हमें प्लेटफॉर्म ऐसा चाहिए था जिसमें हम आपसे कम्युनिकेट कर सकें, आप एक दूसरे से ना कर सकें, क्योंकि आपकी प्राइवेसी इंपॉर्टेंट, आपका नंबर ना एक्सपोज हो, आपका ईमेल ना एक्सपोज हो, आपका आईडी ना एक्सपोज हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं सॉफ्टवेयर में, ठीक है। फिर हम गए superareas.net पे, वो सिर्फ वेब बेस्ड ऐप थी, सारे यूज़ नहीं कर रहे थे। और वहाँ पर हम एक काम मसला था कि मैं आपको नोटिफिकेशन नहीं भेज सकता था, ठीक है। आप ग्रुप superareas.net में बैठ जाओ, मैंने वहाँ लिख देता था कि यार आज की R1 ये है, ये लेंगे, सिग्नल जो भेजता था। तो ये दूसरा काम था। फिर उसको रिफाइन किया एंड देन वी फाइनली सेट डाउन कि अब हमने टेलीग्राम चूज किया ए मेथड सिग्नल्स भेजने के लिए, क्योंकि हमने आपकी मेंबरशिप भी तो टाई करनी है ना, टू मेक श्योर कि आप एक्सपायर हो तो यूजर्स बायर हो। सो फाइनली कल फाइनली डेवलप बेटा टेस्टिंग हो के आप लोग सारे अब ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली पेड मेंबर। और अब नेक्स्ट वीक से स्टाफ ट्रेन हो रहा है, उनकी जॉब अब ये नहीं होगी नैस्डैक क्या कर रही है, ईएस क्या कर रहे हैं, वो फॉरेक्स देख रहे हैं, 15 मार्केट्स हम देखते हैं। बिटकॉइन उस लेवल पे आ जाए जो आपको चाहिए, एथेरियम आ जाए, आपको डॉलर से परवाह है, मार्केट से मोहब्बत थोड़ी है, हमें कोई नैस्डैक नहीं आ रही, बैठे गोल्ड आ गया। तो आप एज ए सिंगल कितना कर लेंगे? आप खाली गोल्ड देखेंगे, नेचुरल गैस देखेंगे, क्रूड ऑयल देखेंगे, एफडैक्स देखेंगे, क्या क्या देखते रहेंगे, राइट? तो हम आपको 14 मार्केट्स का डेटा लाइव दिया करेंगे आपके फोन पे। अब मैसेज की अलर्ट कैसे आएगी? नैस्डैक 5 पॉइंट रह जाएंगे ना जब करीब करीब, तो वो आपको पिंग कर देगा बंदा कि यार प्लीज जाके ईएस देख लें, R2 की तरफ आ रही है, ये नंबर है, ये पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है, शॉर्ट ही करना है ना वहां से। तो अगर 70 में आप ये प्राइस थी, आपको सुबह ही पता है, लेकिन आप इसको देख रहे हो पूरा दिन नहीं आया, लेकिन गोल्ड एक्सपेक्टेड हाई टच कर गया, आप तो मिस कर गए ना। तो हमने कहा यार 100, 200, 300 निकालने हैं, सर्विस को एज सून एज पॉसिबल हम लॉन्च करें, ताकि और अगले बहुत सारी बिग डिमांड हमारे पास हमारे यूजर्स की हमें ट्रेडिंग व्यू पे चाहिए। भाई हम ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं, हमें ट्रेडिंग व्यू पे आपके लेवल्स चाहिए, क्योंकि कुछ यूज़र ये लेके मैनुअल प्लॉट करते हैं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है ना कि इतनी एक्यूरेसी इतनी 90% है यार। यस देयर आर डेज व्हेन दे डोंट गेट रिस्पेक्टेड, ऑफ कोर्स दैट्स वेयर यू पुट इन योर स्टॉप लॉस एंड से कि यार आज एरिया ने नहीं चला। लेकिन अभी जतन भाई आएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे मार्च, अप्रैल, मई, इवन शायद फरवरी से मेरे साथ है। एक दिन था जिस दिन 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, S1 पे भी नहीं रुकी, S2 पे भी नहीं रुकी, लेकिन बाकी जो है यार वो फिर 90 से ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारा मैथ पिछले 20 साल का 90% है कि 90% whatever our computer has predicted। अब इस दिन ये वाला जो दिन है ना, आपको कोई कलर कोड नहीं नजर आएगा। यहां पर मई 9th को, सॉरी फ्राइडे को पूरा दिन no area came. So price went up 30 points, price came down 30 points, went up 50 points. So it didn't go and make a reversal in that day, whether a long reversal or a short reversal, right? So subscription is coming, your software, your areas, your mentors, your access to the videos, you in-floor, online, everything. But try our program for free, 14 days first before you decide to pay us anything. You do need Windows laptop, does not work on Mac.
So you need a window, and you do need 16 gig of RAM. This is what is a critical thing for. So, और कोई क्वेश्चन आपका? टेक्निकल, नॉन टेक्निकल? हाँ जी, कुछ आपका कोई क्वेश्चन? All these mid bands and RSI is explained in हाँ जी, videos. हर चीज़ देखें। जब आप हमारा सॉफ्टवेयर ज्वाइन करते हैं तो पहले तो ये देखें ना, हम आपको सर्विस क्या दे रहे हैं, क्योंकि हमने जो प्राइस इसकी सेट की है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड हाउ व्हाट आई एम स्पीकिंग, राइट? क्योंकि कई दफ़ा ऑनलाइन मुझे आ जाती, भाई अपनी तुम चैनल बदल गए हो, इंग्लिश से उर्दू में चले। सो सुपर एरियाज की आपके पास एक्सेस है, ठीक है। पहला काम तो आपका ये है कि आपने इसमें लॉगिन करके ठीक है, आपने लॉगिन कर लिया। ये लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग वीडियोस, ठीक है, इस पर क्लिक करें। ये पूरी वीडियोस ये हैं 2, 4, 8 घंटे और प्लस 2 10 घंटे की। डैनियल के 40 साल का जो निचोड़ है ना, इसके अंदर है। लाइक आई मीन द गाय इज लाइक, आई विश कि मुझे उनका 1% भी पता हो, नहीं पता। मैं जितना बोल लेता हूँ, like you know, I work hard, but like what he knows is just what he knows, right? So, but again, to deal with him, you need to आपको थोड़ा सा अकाउंट साइज थोड़ा सा बड़ा चाहिए, क्योंकि वो बेसिक मैं तो मैंने इतनी दफ़ा इसमें बताया हुआ है, राइट? सो ये अब हमने इनको रिकॉर्ड किया है स्पेसिफिकली हिंदी, उर्दू, पंजाबी के लिए और इंग्लिश के लिए, ठीक है। अब पहली वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, ये 4 वीडियोस देख लें। उसके बाद अगर आपके ऊपर एनर्जी रही कि 5वीं एब्जॉर्व कर सकेंगे, क्योंकि वो एकदम स्टीप हो जाती है, वैल्यू एरियाज, उसके बाद फिबोनाची बॉक्सेस, ऑल ऑफ दिस कैन रियली स्टीप यू अप, बिकॉज हमने ये मटेरियल बनाया है एक ग्रेड 1 के लिए भी और एक पीएचडी के लिए भी, क्योंकि ऑफ कोर्स हर बंदा डिफरेंट है, डिपेंड करता। अगर ग्रेड 1 में रहना है तो आपके 50 से 100 बनते जाएंगे, ठीक है। आप जैसे जैसे अपने ट्रेडिंग की जर्नी तेज ऊपर जाते रहेंगे, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हमने नहीं छोड़ा जो इसमें फिर आगे सीरीज शुरू हो जाती है फंडिंग की। ये तो आपकी टेक्निकल है, फंडामेंटल एनालिसिस है, रिस्क मैनेजमेंट है। उसके बाद जो शुरू हो जाती है, देन आई स्टार्ट टीचिंग यू कि निंजा कैसे यूज करना है जी, निंजा में राइट क्लिक कैसे करना है, ऑर्डर पोजीशन कैसे बंद करना। ये तो हो गया ना, ट्रेडिंग सीख ली कि बाय एंड सेल क्या है, ईएस क्या है, नैस्डैक क्या है, टिक क्या है, पिप क्या है, सारी डॉलर कितने चाहिए। फिर आपको एक एनवायरनमेंट भी तो सिखानी है कि गाड़ी चलानी कैसे है। आपको गाड़ी डिजाइन करने को कोई नहीं कह रहा, आपको कह रहा है हैंड ब्रेक किधर है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो यू हैव लाइक couple of hours of homework. So give yourself minimum 3 months before you start to see some results. कि मेरे पास जो है ना थोड़ा से इसको ये आपकी वीडियोस एंड देन स्टार्ट टू गो इनटू डिटेल्स के थी। मैं आपके लिए बताया कि मिड बैंड का ट्रेल कैसे लगाना है, विद ट्रेलिंग, विदाउट ट्रेलिंग, स्टॉप लॉस कैसे है। हमने हर चीज को इतना फाइन डिटेल से तोड़ दिया है कि यहाँ लिखा हुआ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। 14 मेथड बताए थे मैंने आपको एंटर करने में, हमारा सॉफ्टवेयर एनालाइज कर रहा है। अगर आपने एक लेवल एक ही पकड़ लिया ना, तो डैनियल की ये जो वीडियो एक्सप्लेन करती है, let me see if there's an audio here. So there's audio with lectures and everything is done for you. So again, it's not a one person teaching you, it's a full program that allows you to understand from grassroots levels that, hey, what it is that you're looking at. So there's 2 ways to approach this. Coming to a conclusion, you want to come in, you want to say, you know what, I don't have a lot of time. इतना भी टाइम नहीं है कि मैंने सीखना है कुछ। हम आपको हैप्पी के साथ लगाएंगे, वो आपको एक लेक्चर देगा, मेंटरशिप 2-3 सिखा देगा और आपको नैस्डैक पे ले आएगा। एक्सप्रेस का भी एक्सप्रेस है, जो काम 40 साल में हुआ है
हमने उसको 20 घंटे में कर दी। ठीक है, आपके पास 20 घंटे भी नहीं, क्योंकि आप वीडियो 5 तक जाएंगे, वीडियो 1 शुरू में भूल ही होगी कि जी मिड बैंड क्या था। तो स्लोली यू शुड सी सनी के बुकलेट्स कितने इतने इतने नोट्स लिखे हुए सनी ने। आई नो, सॉरी, just poking fun at your notes. Sorry. So, he's funny. Right? So he takes notes of everything. I think he has heard my lectures maybe well over 200 times. Right? So just kidding. But again, that's how. But he, if I can ask him, he can tell me down to exact line how our software is operating. So there's two ways to approach this. You want to come in, you're like, you know what? I will learn slowly, but let's do some earning part first. So we are going to put you in express method. We're going to put you with Murtaz for yes, or we're going to put you with Happy for Nasdaq. We have Sunny in the other office. We have Majid Bhai. We have all these mentors. We'll say, all right, how much money do you want to make? $100? Do this. You at least should be making $100. How much your target is? $50, 1 mid band, 2 mid bands, you're done. If you want to do areas, stick with Happy, join his Zoom. He will say $100 done. You are not learning in terms of, but again, if you want to then say, all right, now I got of it, ask Happy, give me 2 hours of exclusive sessions, right? So all of these things are open for you. I'm here. I don't teach one-on-one because I have a huge workload in front of me to look at the overall health of the company in terms of developing new products, like new innovation. Like I said, my job, I came a bit late. I had a meeting with developers because we have to take this to trading view as soon as possible. That's a huge market that we are missing out when you are not touching trading view, all of this. So Ninja is great. So how do they all work? So ये है जी आपकी जॉब, ये है कि आपने पहले वीडियोस देखनी है और पूरी देख के एक चीज शुरू कर दें। आपके डैनियल के लेक्चर्स में है, एक चीज सिखाएंगे अपनी सारी वीडियोस में। दोनों चार्ट रेड हैं, सेल में रहें, दोनों चार्ट ग्रीन है, बाय में रहें। अगर आ सकते हैं, कुछ लोग आ सकते हैं, इस फ्लोर है, कई दफ़ा तो मैं कहता हूँ अपनी कैंपिंग चेयर साथ लेके आएँ, यहाँ जगह नहीं होती। उस ऑफिस में मतलब बंदा चढ़ा होता है, सिर्फ देखना है कि, क्योंकि ये वो यहाँ बैठा होगा, आपको बता देगा, ठीक है कि जी ऐसे ट्रेड करना है। आपने किसी से वर्चुअल है, हमारे पास मेंटर्स बैठे हैं, मंसूर भाई बैठे हैं, हैप्पी बैठा है, तो वो आपको 1-on-1 जूम पे भी सिखा सकते हैं। आपको यूएई में हेल्प चाहिए, हम वहाँ पर भी हैं। यूके में हेल्प चाहिए, अभी हमने फर्स्ट ऑफिशियल पाकिस्तान में अपना रिप्रेजेंटेटिव सेट कर रहे हैं, ताकि उन्होंने, मुझे अभी उनसे बात हुई किसी के थ्रू के 15 लाख रुपए का अकाउंट 60 लाख पे ले गए, रियल अकाउंट, क्योंकि उन पाकिस्तानियों को GFF और AMP की ज़रूरत वो नहीं कर सकते। They don't have access to that's impressive, right? So if you need help directly in Pakistan, we have a person directly on the ground that can on the इंडिया में काफ़ी हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो गया है। So it's we're building a community altogether. Now, which comes to a point, this is a great software. Why do you have a need for selling it if you can make that much money? So I have to again explain you from a software point of view. 4 answers broken down. Number 1, when I use this software, I make money. Good. When you use this software, we make money. Like our company makes money. We have an office, we have an expense, we have 15 staff, 2 offices, lots of things, right? That's second thing. Of course, that's extra business revenue for us. Number 3, when you use our software, we collect data. How these 12,000 users are behaving, how their so it's a collective data pooling to understand. So that's why we can predict our futures from a massive people. When you log into Ninja, we have your record. We're not looking at your accounts, by the way. It's all in the agreement. We don't know your account balance. We don't know how much profit you made. We don't know how much money you lost. We just know, sir. So the more users join, the better our analytics become in terms of understanding the data. The more people will be trading at a certain price, we will understand, yes, everybody sold at 57.10, and that's a good thing, right? And the fourth thing, the way I look at it is, as a company, as a human, we all have a moral obligation towards our other social members. Some are
at a good stage in life, some are not. So when we looked at it, we have to make the program affordable enough where you can, so the cost of the program shouldn't be coming out of your pocket. We have a funded program that you can go in and earn enough to pay the coverage per month. It's not ridiculous. It's only $300 a month we charge. That it comes down to $10 a day. It's enough for us to sustain our business, but it's enough for you to make sure this doesn't add a burden. So once you're done your trial, give yourself 3 months at least before you say, hey, I'm not getting it. And then we'll develop a program with me, with Daniel, with Happy, with Murtaz, and say, which part are you struggling? After 3 months, if you're not making $100 a day, come and sit down, have a one-on-one meeting with Happy, and then we can put down a plan that if you're failing an exam after exam after exam because you have to go through and take a funded exam, and we can figure out what is causing. And the 99% of the users will say, यार greed का मसला आ गया, यार डिसिप्लिन नहीं आ रहा. होता ये है कि 100 बन जाते हैं. यहाँ पर मुर्ताज के साथ बैठ के 9:30 ट्रेड शुरू हुआ, 9:50 तक 100 बन गए. वो नंबर बोल के कहेगा यहाँ से मिडमैन लें आप करें. उसकी तो अब जूम भी शुरू कर दी हमने. हो गया जी. अब क्या है जी, 90 मिनट का काम था, आपने 10 मिनट में कर लिया. अब अगले पूरे 23 घंटे क्या करना है. मेरे साथ भी हुआ, ठीक है. एज ए ट्रेनर और ट्रेडर में फ़र्क होता है. घर से पैसे बने हुए आए हैं, रात को नाइट सेशन एरिया लिया हुआ है, 9 बजे फिर मौत पड़ गई. लो जी, एक ट्रेड और डाल लें क्योंकि 462 का नंबर अच्छा नहीं लग रहा, इसको 500 कर लेते हैं. 500 जो कर लेते हैं तो वो जो फिर 400 जेब से देना पड़ता है, राइट. सो इट डजंट मेक मी अ लेस इंटेलिजेंट पर्सन व्हेन माय डिसिप्लिन टेक control of my better part. Hello ji. So the idea is, it is discipline. We'll do everything in our power to make sure you're successful as long as you follow. Because होगा ये कि यहाँ यूजर्स हैं अपनी मर्जी करते हैं, ठीक है जी, फिर कर लें. इवेंचुअली आप छोड़ जाओगे. ट्रेडिंग में इवेंचुअली 97% छोड़ जाते हैं या थक जाते हैं. वो कहते हैं, लेकिन मैं और मंसूर के भाई बात करते हैं बैक एंड फोर्थ, क्योंकि हमारे साथ बहुत हुआ जब फास्ट ट्रैक ट्रेडिंग आई. We did incredibly great, and together that company just packed up and did a rug pull, and then it took us a bit of time to get our discipline back in, because that's losing, not getting paid $60,000-$70,000 from a funded company that just ran away. It's you know, when you see 70,000, you're about to get a payout, and you don't get a payout because the company has filed for bankruptcy. That takes a bit of a time to readjust to the, hey, I got to do my EAs again, my PAs again, my this and that again. So, but discipline is the key. आप ये करते रहें, आप हो जाएंगे. तो मैं ये चाहता हूँ, जो my goal is, ये जो 3% है ना, ये सारे सुपर एरियाज वाले हो. ये बाकी दुनिया है 97% फेल होने वाली. ये 3 तो हम हो ना. इसमें ये ना हो कि आप ये जो 10 बैठे हैं 7 चले जाएं और 3 बैठे रहें. मैं कह रहा हूं कि ये बाहर छोड़ देते हैं. आप सुपर एरियाज के मेंबर हो तो आप कहो, यार मैं उस 3% में से हूं जो आता है, जो बैठता है, जो डिसिप्लिन के साथ काम करता है. हम आपको चीज़ें ही दे सकते हैं, हम आपके ब्रेन में जाके एक्शन तो नहीं कर सकते. फ्राइडे को नहीं एरिया अभी जतन आने में पूछना, सर कितनी देर है, तो वो बताएगा आपको. बैठा हुआ है, नहीं है जी, एरिया नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया. शाम को 4 बजे आया, $200 अकाउंट में लिया, चला गया. राइट. तो ये डिसिप्लिन है, क्योंकि मार्केट तो चल रही है हर वक्त. आपको अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. जी जी. हाँ जी. देखिए, वो आपको ऐसा डिसिप्लिन देगा कि आपका कंप्यूटर बंद करवा देगा. $100 बनवाने के बाद वो जूम ही बंद हो जाएगी. फिर आपको ना पता होगा रना क्या है. तो देखिए, वो इसलिए होता है, अगेन फोर्स डिसिप्लिन है. हाँ, फोर्स डिसिप्लिन है कि अब हमने क्या किया था, कुछ अर्सा पहले हमने एक जॉब ऑफर की. आप में से आज भी मेरी ऑफर आप सारों के लिए ओपन. बड़े आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा इस सिर्फ ऑफर से. आपको हम एक जॉब ऑफर करते हैं कि आप एक अकाउंट खोलें $5,000 का, ठीक है,
उसके अंदर $5,000 जमा करा दें, ए रियल अकाउंट, $5,000 का अकाउंट होगा। ये एक काइंड ऑफ रिजर्व कैपिटल है। ये जॉब ऑफर है हमारे से, अकाउंट खोल के आप हमारे पास जॉब के लिए आ जाए। सुबह आए यहाँ पर सुबह 9 बजे जॉब पे आ जाएं, इन पर्सन के लिए या ऑनलाइन के लिए, पता लगे ऑनलाइन एप्लीकेशंस आनी शुरू हो जाएं। और आपकी छुट्टी यहाँ से जॉब से होगी 4 PM, 9 to 4 ही होती है। मिनिमम वेज हम आपको देंगे जो इस वक्त कनाडा में $22 तक निकल रही है, ठीक है। तो हम एक मैथ भी करते हैं बाकायदा। तो चलें जी, $25 हमारी कॉस्ट आएगी आपको पे करने के लिए। आपकी जॉब क्या है? आप अपना लंच लाएं, आपने 4 से ये सिर्फ टिकटॉक देखनी, और कोई काम नहीं। यूट्यूब देखें, टिकटॉक देखें, फेसबुक देखें, और कुछ नहीं करना, कोई काम नहीं। आप आ जाएं, बैठ जाएं। अब यहाँ से आप कहेंगे यार ये तो बड़ी अमेजिंग जॉब है, इसमें क्या। आई नो जितना मुश्किल ये काम हो जाएगा ना, आप लोग हैरान होंगे। चलें जी, आपको हम दे रहे हैं 8 घंटे की जॉब है, एक एवरेज सैलरी निकाल लेनी, 25 times 8, $200 आपके हमने निकालने हैं। आपको जॉब हम दे रहे हैं कितनी? 5 दिनों की, ठीक है। थोड़ी सी कम बनती है लेकिन चलो, 1000 टैक्सेस भी हैं। आपके 4 से इस वक्त मिनिमम जॉब दे रही है 3000, 4000 जरा 150 लास्ट टाइम हमने निकाले। तो मिनिमम वेज $3000 आपको मिलेंगे फारिग बैठने के, ठीक है, बिल्कुल फारिग बैठने के, कोई काम नहीं करना। हाँ एग्जैक्टली। तो 1720 के हिसाब से अगर आप 8 आवर कर रहे हैं, चले से 125 एग्जैक्टली, वो $2500 बनता है, ठीक है। तो आपको अब कुछ लोग टिम होर्टन्स में ये जॉब करते हैं, कुछ कहीं करते हैं ना, मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं, तो ये यही निकलेगी ना नेट, आपकी $2500 का चेक मिलेगा। हमसे भी आपको मिल जाएगा। चले आपसे कुछ क्लीनिंग ही करवा लेंगे यहाँ बैठा के, कुछ काम ही करवा लेंगे किसी के तो ये आपकी जॉब है, फारिग बैठना। इस अकाउंट को जब हम आप ही का सामने आपने क्लिक करना है, हमने आपके लिए ट्रेड नहीं करना। हम कहेंगे यहाँ से एंट्री ले लो, इस अकाउंट में लॉस हुआ, लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट हमारा और आपका होगा कि हम रिकवर्ड हैं, ठीक है। लेकिन इस अकाउंट में जितने पैसे बनेंगे वो हमारे हैं, जितने बने, क्योंकि हमने आपकी जो जॉब निकालनी है वो इसी पैसों में से निकालनी। तो लेट्स सपोज इसमें से मैं $300 US रोज का निकालूं, 90 मिनट में निकालूं, 20 में निकालूं, 10 में निकालूं, 1 में ना निकालूं। आपको अगर स्लेवरी पसंद है तो इधर आ जाएं, अपना काम पसंद है तो होगा ये कि आप आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे कि अगर मैं डिसिप्लिन के अंदर रहूं तो मैं खुद के $20 से $22 पर घंटे के निकल आते हैं। $100 US मजाक है यहाँ पर, मजाक। तो ये है नाउ। अभी चाय आने से पहले थोड़ी सी मैं, हमारे जतन भाई आ गए हैं, उनको थोड़े सा मैं देता हूँ, फ्लोर देता हूँ, क्योंकि स्टोरी इनकी इस तरह है कि इफ़ आई आस्क हिम टुडे, मैं हमेशा मजाक उड़ाता हूँ, सॉरी, कि मैं इनसे पूछूं कि मुझे बताएं डाइवर्जेंस क्या है, और इन्हें एक दिन उन्होंने सीख ही लेनी है कहते यार हर बारी मैंने कहता है कि, क्योंकि सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट डाइवर्जेंस का होता है कि प्राइस ने हाई लगाया, मूविंग एवरेजेस नहीं या नहीं लगाया, तो उन्होंने कहा यार मैं हर बारी मैंने कहते कि तो, लेकिन वो कंसिस्टेंसी से अप्रैल में उन्होंने 5 माह पहले हमें ज्वाइन किया और एक मेथड पिक कर लिया। ये 14 मेथड पड़े हैं, एक पिक कर लिया, हैप्पी से 2-3 सेशन लिए, पता लग गया कि यार मेरा टारगेट रोज का कितना है। तो वो $100 पर डे 200 होते हुए अप्रैल में इन्होंने $10,000 US पे आउट लिया है टेक प्रॉफिट से। 7 पर डे चल रहा है FTMO। अब वो आहिस्ता आहिस्ता, अब फ्राइडे को तो 83.81, अच्छा कोई एरिया कटिया उतो फ्राइडे नहीं, कुछ नहीं कटिया, चलो हो कोई गल, हाँ ठीक है। तो ये है डिसिप्लिन। तो मैं थोड़ा सा उनको फ्लोर दूंगा, सो व्हाइल आई टेक अ बिट ऑफ अ ब्रेक, एंड देन आप इनको भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये क्या करते हैं, क्या स्ट्रेटजी है। तो ही विल गिव हिज इंट्रोडक्शन। वो सो आई वेलकम हिम टू ऑन द स्टेज टू काइंड ऑफ, ऐसे माइक ला लो।
ਹੈਲੋ एवरीवन, ਮਾਈ ਨੇਮ ਜਤਿਨ ਭੱਲਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਨਵਰੀ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ, ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਸਟਰਗਲ ਲਈ। ਫਿਰ ਹੈਪੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਬੈਠਾ 2-3 ਸੈਸ਼ਨ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਰਾਫੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਮੇਰੀ ਆਈ ਉਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੇ ਆਊਟ ਲਏ ਸੀ ਏਪੈਕਸ ਤੋਂ ਪੇ ਆਊਟ ਲਏ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਲ ਚਲ ਗਿਆ। ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ 200 ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ 200 ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਾ, ਪੇ ਆਊਟ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਡੇ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਈ ਰਾਫੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ 100 ਤੇ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਾਰਚ ਜਦੋਂ ਪੇ ਆਊਟ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇ ਆਊਟ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਏ ਮੈਂ ਪੇ ਆਊਟ ਵੀ ਲਏ, ਮੈਂ ਏਪੈਕਸ ਤੋਂ ਲਏ, ਏਪੈਕਸ ਤੋਂ ਪੇ ਆਊਟ ਕਰ ਲਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ। ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪੇ ਆਊਟ ਲਏ। 2 ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਪੇ ਆਊਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, 100-200 ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਸਿਕਸਰ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਨਿਊਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸੀਗਾ ਟਾਰਗੇਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 5 ਮਾਈਕਰੋ ਪਾਏ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ $100 ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਡਨ ਫॉर द ਡੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ $2,000 ਆਇਆ ਸੀਗਾ। 2 ਅਕਾਊਂਟ 2,000 ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਏਰੀਆ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਲੋ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਇੰਨਾ ਵੋਲੀਅਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। PPI ਸੀਗੀ, CPI ਸੀਗੀ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਫਰਾਈਡੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਥਰਸਡੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੈਨਸਡੇ ਲਿਆ ਤੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਟ੍ਰੇਡ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਏਰੀਆ, ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਸੀ ਕਰਦਾ। R1 ਹੋ ਗਿਆ, S1 ਹੋ ਗਿਆ, S2 ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ R2 ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ? ਡਿਸਪਲਿਨ ਹਾਂਜੀ, ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਤੇ ਫੈਬਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਮਾਰਚ ਪੇ ਆਊਟ ਮੇਰੇ ਮਾਰਚ ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਫਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਲਈਏ, ਏਪੈਕਸ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਟੇਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਸਤਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲਓ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਆਊਟ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਸੋਚੋ ਇਹਨਾਂ ਪੇ ਆਊਟ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲਨੌਕਸ ਦਾ ਲੈ ਲਓ $15 ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ $15, ਹਾਂ $15 ਦਾ 50,000 ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ PA ਦੀ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ $148, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3,000 ਬਣਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ। 2500 ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਮਿਲਦਾ। ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 2500 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ ਬਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਾ 200 ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਊਂਗਾ, ਕੱਲ 200 ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ। 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੇ ਅੱਜ ਹੀ 1000 ਬਣਾਇਆ, 500 ਵੀ ਕੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇ ਆਊਟ ਮਾਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਾ ਲਾਈਏ ਛੱਕੇ ਦੀ। ਹਾਂ 3000 ਬਣਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ 2 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, PA 'ਚ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ $150। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ $150 ਕਿ ਮੈਂ 15-20 ਦਿਨ ਟਰੇਡ ਕਰਾਂ। ਗ੍ਰੀਨ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇ ਆਊਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। PA ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ PA ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ। ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਆ 200-300 ਕਰਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ 600 ਬਣ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਕੱਲ ਵੀ 600 ਬਣਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ 600। ਉਹ ਤੁਸੀਂ 600 ਵੀ ਦਿਓਗੇ, 1200 ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰਥ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਸਮਝਾਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਗ੍ਰਾਫ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ RSI ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਟਰੈਂਥ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਏਰੀਆਸ 'ਚ ਲਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਚੀਜ਼ ਆ। ਏਰੀਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਏਰੀਆ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਏਰੀਆ ਬੈਸਟ ਆ, ਏਰੀਆ ਬੈਸਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੈਨਸ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। R1 ਮੈਂ ਲਈ, ਮੈਂ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। 5 ਮਾਈਕਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ 10-11 ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ $110 ਬਣ ਗਏ ਸੀ।
ਹਾਂ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 5 ਮਾਈਕਰੋ ਸੁੱਟਤੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਐਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਵੀਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਨੈਸਡੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨੈਸਡੈਕ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਭਾਜੀ ਕੋ ਨੈਸਡੈਕ ਹੈਪੀ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨੈਸਡੈਕ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸਡੈਕ ਕਰ ਲੇਗਾ ਉਹ ਯੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਦੱਸ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੈਸਡੈਕ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਈਐਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ES ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸਡੈਕ ਹੈ ਨਾ ਨੈਸਡੈਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਈਐਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਨੈਸਡੈਕ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ 50 ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ 50 ਪੂਰੇ ਕਰ ਉਹ ਦੇਣੇ 50 ਹਾਂ ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸੇਫ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਆਊਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਸ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਚ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ 150 ਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੇ ਆਊਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਅਕਾਊਂਟ ਲੈ ਲਓ ਉਹ 2 ਅਕਾਊਂਟ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰੋ 3 ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 150 ਚੱਲ ਗਏ $500 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਯੂਐਸਡੀ ਭਾਜੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ $500 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੇਖ ਹਾਂਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਬਟ ਮਹਿੰਗੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ $900 ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 3000 ਬਣਾ ਦਿਓ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਹੀ ਕਢਾ ਲਓ ਭਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਇਆ ਹੁਣ ਬਾਏ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਲਾ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੇ ਆਊਟ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਫਸਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੇ ਆਊਟ ਵੱਲ ਦੌੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ $15 ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕੇ 1500 ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ 1500 ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਦੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਰਾਫੇ ਹੈਗੇ ਰਾਫੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਹੈਪੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ हाँ नहीं हाँ कोई गल नहीं इट्स ओके कोई गल कॉन्सेप्ट था मुझे वो समझना है कौन सा हाँ जी इसमें था कि अगर पिवट पॉइंट से R1 से थोड़ा बिलो अगर ओपन हुई है तो वो वापस पिवट पॉइंट को टच करेगी हाँ जो कि ऑपोजिट है S1 के केस में S1 से थोड़ा सा ऊपर मतलब बिलो अगर ओपन हुई है तो वो सेलिंग ट्रेंड ही रहेगा वापस पिवट पॉइंट पे नहीं जाएगी हाँ फिर वो S2 पे हम बाय करेंगे ना S2 पे मैं ये पूछना चाह रही हूँ ऐसा क्यों है लाइक S1 से थोड़ा सा अगर ऊपर भी ओपन हुई है तो वो नीचे ही जाएगी वापस पिवट पॉइंट अपना उसका लो जो एशिया लो है ना उसको टेस्ट करने जाती है मार्केट हाँ अपना लो बनाने जाती न्यू ईयर सेशन लेकिन R1 के केस में ऐसा क्यों नहीं है ऐसा है R1 के जब होती है पिवट पॉइंट से ऊपर वो वापस पिवट पहले R1 जाती है अगर फॉर एग्जांपल आज का प्रेशर क्योंकि आपको प्रेशर और बेस दिखा दी जाती है ठीक है कि मार्केट की मूवमेंट है अब मार्केट अगर खुली ही पिवट पॉइंट से ऊपर है और प्रेशर आपको लो दिखा रही है ठीक है तो वो पहले अपना नाइट सेशन हाई लगाएगी उसके बाद नीचे जाएगी मूवमेंट ऑफ तो ये रोज इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप एनालिसिस करें ऐसे बनाना सेकेंडरी है प्राइमरी ये है कि आप एनालिसिस को देखें रोज मार्केट की मूवमेंट सेम है कोई डिफरेंस नहीं है उसमें तो जब आपको एक चीज रोज नजर आ रही है रोज नजर आ रही है अब आपको पता लग गया कि रोज मैं बैठता हूँ या बैठती हूँ तो मुझे रोज एक ही चीज नजर आ रही है करने को आपने वही काम करना है फिर वहां बैठ के अपने सेटअप ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ R1 ਹੀ ਲੈਣਾ ਤਾਂ R1 ਹੀ ਲੈਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ R2 ਲੈਣਾ ਜਾਂ S1 ਲੈਣਾ S1 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਇਨ ਨਾ ਕਰਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੰਪ ਇਨ ਕਰਦੇ ਨਾ तो सानू अपना S1 भी नहीं ऐसी लै सकते R1 क्योंकि ऐसी पहले लॉस इतना लै लेने मुझे बस ये थोड़ा सा ऑपोजिट था ट्रेंड तो इसको क्लियर करना कि क्या चल रहा है सब ठीक है हां ओके क्योंकि सेलर का प्रेशर है ना प्रेशर चली जाता है थोड़ा कोई फॉर एग्जांपल आ रही है ऐसी ट्रिगर करेगी और मार्केट ऊपर आएगी क्योंकि मार्केट ऑफ होता है और जिस दिन ट्रंप की जिस दिन दोपहर ट्रंप की न्यूज़ है ना उस दिन मार्केट ट्रैवल करेगी बेशक ट्रंप अच्छा करे वो इफेक्ट बात आएगी एक खौफ है एफओएमसी हर थर्सडे मार्केट देती है रोज सानू पता है कि रहना ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 99% ਸੇਮ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਪੇ ਪੋਫੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ
ਸਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇਖੀਏ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰਲੀ क्या करते हैं कि मार्केट नीचे ट्रैवल करेगी अभी फिर नीचे आपके सजेशन के अकॉर्डिंग सबसे इजी स्ट्रेटजी कौन सी है for एरिया सबसे सस्ता एरिया easy to understand इजी टू अंडरस्टैंड और उसी के साथ स्टिक रहे स्टिक लो हाँ अपना टारगेट बना लो ना रोज के आज मैंने 150 लेने मैंने बंद कर देना 3 माइक्रो के साथ 4 माइक्रो के साथ माइक्रो का मुझे concept नहीं पता ओके थर्ड तक मैंने वीडियोस देखी हैं अभी उससे आगे नहीं आगे आप आपको पता लग जाएगा माइक्रो क्या होता है मिनी क्या होता है बस जी done। और ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਹੀ ਵਹਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ हाँ जी ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਹੀ ਵਹਾ ਦਿਓ गिनने क्यों कार्ड चाहते ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਣਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ जेब ਜੇਮੰਤ ਦੀ ਹੈ अच्छा जयमंत ओके ਆਣਗੇ ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸੌਖੇ ਨੇ ਬੜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ हाँ हाँ ਇਹ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟ आशीष साहब दी ग्रेट आजे सर अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप आजे आ जाएं बैठें प्लीज कैसे हैं आप ठीक है हेलो जी सर क्या हाल है जी कैसे हैं बस बढ़िया आप बताओ भाई यार ये सर सवाल है नहीं मुझे पता ही नहीं है सर ये असल मेरी दोस्ती नहीं है हाँ ये असल ही है नहीं सच ये इसका क्या सवाल है हाँ ये हाशमी साहब में आएंगे रिकॉर्ड सेम एज इन क्यू बेस नीचे है तो इसमें डन करता नापी को टेक ओवर कर ओके ठीक है मैं दे देना चलो चलिए और दस दिंदे या नहीं मैं दस दिंदा कि वो किस तरह होएगी तो किस तरह हाशमी साहब देंगे ना हाशमी साहब का एक्सपीरियंस है ना ये अच्छा, कुछ आपने थोड़ा सा लेकिन इसको यहाँ पे आके समझाए ना हमको ब्रेकआउट बोर्ड पे समझा देना ब्रेकआउट समझा दे आए चल रहे सर कैमरे सर क्या करना है सर आए पे रोशनी डाल ईएस पे रोशनी हो ये सॉरी वो कहते हैं ये तो हाथ नहीं लगाना सर उनको पिस्ताचियो अवार्ड पसंद है गल ये है भाईजान कि जो बंदा जिसे सेट हो गया सही है वो अपना डॉक्टर ने मैं अखा तो नहीं है मैं की कर सकता हूं बिल्कुल सही है यार साहब ये आप अपना इंट्रोडक्शन दे कब इन्होंने ज्वाइन किया कैसे किया इनकी स्ट्रगल आई स्ट्रगल तो कंटिन्यूअस है सर आज क्राउड कम है विक्टोरिया डे की वजह से आई गो लॉन्ग विकेंड ठीक ओके सर मेरी स्टोरी अबाउट ईयर एंड हाफ जब हमारे दूसरे ऑफिस में थे तब ये सब फंडेड अकाउंट वगैरह नहीं थे आई स्टार्टेड एट दैट टाइम एनीवे फिर फंडेड अकाउंट आया फिर सब कुछ आई एम ए फुल टाइम एम्प्लॉय फुल टाइम वर्किंग 37 years in aviation I'm now 76 so और trading I started about a year and a half back उस वक्त we had to open GFF account but then I lost money in that about 1200 then the funded account came Apex I did 20 PAs and I got a good payout of that after that things changed and a lot of things have improved Can I interrupt? yes sir Yes, sir. Being beginner, right? I'm very new. PA and EA. If you kindly elaborate. PA, what is PA? okay 20 PAs. Yeah, What that's- is that? I will come to that. I will just explain to you first what it is, the whole thing.
हाँ कुछ थैंक यू वेरी मच थैंक यू ठीक Okay, sir, since you're new, so I start with the basic. You see in the newspaper, on the Google or on the internet, what was the S&P closed today? Say it was like 5. आप अभी शुरू करें, ये सूख जाना तब करते हैं काम। हाँ, ठीक है, असल में आज लड़का नहीं आया ना, छुट्टी पे है। अच्छा कोई बात ये ले अभी ऐसे समझा रहे, कोई नहीं, सामने ऐसे समझा रहे। Okay, so we see like S&P, it closed at 5620. This is the number here, this is the price. The chart that we see, we have, but this is the closing price. In the day, it may have gone up, down, sideways, whatever, but this is the end of the day price. But you don't know what happened the whole day. Then one is this thing, then you go to the other chart that you see on the websites. It is like it'll give you the price against a time. This is the usual, and this is the dollar. So at each price, there's a time, 5 minutes, 1 minute, 30 minutes, 1 hour, 4 hour, the whole day. So you get a different price. Then comes the candlesticks that you see, the usual, with a wick and a body. This is different than this because this gives you only the closing price of that time. This will give you the price if it is green. Suppose this is a green candle. It will give you the open price. At what price it opened? What price it closed.
This is the close price. This is the high of that time, and this is the low of that time. It is called OHLC, open, high, low, and the close. So you know in the whole day or in that time, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, half an hour, 1 hour, this is what happened to the price. So these are different prices here. So this is the open price, this is the close price, this is the highest price, and this is the lowest price in that time period of time. What we use here is called Renko bars. It is not the line or the fixed or the candles. It is different than this. This is based on time and the price. This is based on the price only. Renko bars. So what the Renko bar is, it is like a square thing. We set, this is the design of the software. They say if the price moves from $20, for example, to $25, a move of $5, only then a new bar will be made. If it is within this, it will remain this. It may take 1 minute, it may take half an hour, it may take the whole day. The bar will remain the same, it will not change. This changes with the time. This changes with the price only. So this is a big difference to understand Renko bars, R-E-N-K-O. R-E-N-K-O. These are called candles. This is line. Okay, so this is Renko bars. Now the next bar will be made when the price moves to $30. So when it moves to $30, then the next square bar will be formed. So this will be $30. If the price drops $5 more, it comes to 15, then it becomes, the color changes, and it is, or it can be here. This will be $15, a difference of $5. So this is the price we set in Renko. This is the design of the software. It can be $5, $1, $100, but time doesn't matter here. It is only the price. So these are called Renko bars. So you have to be careful. This is price dependent. This and this candles are time dependent. So this is a big difference. So this you have to understand. So now coming back to your question, what was your question? PA and EA. So when you come to the, any question on this, Renko bars? Because like in here, if there's a big rally and the price moves, this whole thing becomes very big. One candle in that time frame. But in Renko bars, since the price is set, so many bars will come up. Or no bar will come up, there's no price change. So you will see big movement when the price changes. This one is dependent on the time. And this one, if the price changes a lot, the bar will become long. That's the only difference. Okay, now, when you go to the funded accounts, so there are two steps. One is the test part, which is the EA, which is evaluation. This is the evaluation. Is evaluation or test. Depending on the company, funded company that you're taking, each has got a different requirement, and there are different size of the account. It starts with 25,000, 50, 75, 100, 300, 500, whatever. So taking the basic, which is a $25 account, $25,000 account,
So you have to first pass the evaluation, which is the test. For example, in 25,000 in the legend, you have to make $1,500 and not to lose $1,500. This is the target. In what time frame? Okay. Time frame is immaterial, but you have to trade for at least 10 days. 10 days. Yes. 10 days can be any 10 days, but the fee that you have paid for the evaluation account is like $50. That is good for 30 calendar days, not the trading days, calendar days. So like 1st of May, you bought it, 30th of May, it will expire, they will charge you 30 days. You can make $1,500, but in a minimum, you have to trade for at least 10 days, not that in one day you make it. Okay? Suppose, so there are 3 possibilities here. You make $1,500, you don't make $1,500, or you bust the account. So if you make $1,500 and you trade it for 10 days at least, you pass the test. Then you go to the PA. If you don't make it, say like you make $1,000 in the whole month, so the next month they will charge you $50, you can continue and then complete. The sooner you complete 1,500, you go to the PA. Okay. If you bust the account within a week or 10 days or whatever, within the month, then your account is, you can reset the account, which is not recommended. You cancel it or you leave it till the end of the month when it, again, yeah. So these are the 3 possibilities. So once you pass the EA, and then there are certain conditions to this, like the 10 days of trading, you should not make more than 30% of the target, which is $450 in any day. If you make it more, then they penalize you. You can make less, that's okay. But by making less, you stretch the number of days. So you have to be within, so those are certain conditions. And then some funded companies, they have a trailing stop. The trailing, drawdown, and the other is end of the day. Legend, which is why Mr. Rafay recommends. Suppose you make a loss, or you're trading and you enter a trade, you got $200, and then it goes down and it's $100 profit still from here, and you close here. So the other companies, they will give you $100, but they will deduct $100 from your $1,500 because you should have closed at $200. So they penalize you. But in Legend, it is only the end of the day that you make the losses. They add everything, the whole day that you traded, end of the day, what was your profit, what was your loss. The net result is either profit or loss. So total of 30 days, 10 days of trading days, not more than 450 yes, a day. yes. And okay. Okay. So yeah. So once you pass this, then you come to the PA. So PA is basically performance account. Yeah. So some call it master account, some call it performance account. So short form is PA. Evaluation is EA and performance is PA. Yeah. So this is the test that you pass. So it is paper money. It's not the actual money. When you come to PA, then it's the actual money. So again, the same condition applies here. But the moment you complete, so there are 2 things. In the PA, when you pay the fee, it's about $130. It's more. It's more. Okay. But there is no monthly fee. It's a one-time fee.
In the EA, it is a monthly fee. In the PA, it is a one time. So you have to pass only once? Only once. That's it. For each account. Okay. You can have more than one account. Okay. So in the PA, it's only one-time fees, like $130, and then it's good for life. There is no recurring or monthly fees. And the good thing about the PA is the same conditions, but once you achieve 1600, sorry, anything above that is yours. You can ask for the payout. Still, we have to work 10 days or we Yes. can work the whole month now in PA? PA, you can take your sweet time. You can do more than 30 days, 40 days. For example, if you want to take cash out, Right. so for that you have to trade at least 8 to 10 days. And then, for example, if you are going with a profit of $300 each day, so for example, and your account is $1,500, right? So 10 days equal to 3,000. So you can get like $1,500 from that account, and like the 1,500 will be your threshold, right? So you remain within $450 limit in the day, but every day you make 400, 400, 400. So in 4 days you make 1,600. Above that, whatever you make is yours. So there is no time limit on this in the PA. अब बताइए कि 20 PAs हैं आपके, how that works. So the way that we do here is first you do one account, one PA. Once you get the payout, you try to recover all your expenses. The monthly fee you pay for the software, the fee you paid for the EA, the fee you paid for the PA. Once that is recovered, then you open multiple accounts with that money, not from your pocket. Now you're self-sufficient. So you can have one more account, you can have 5 more accounts. It allows you about 10 more accounts. So then, once you have the first account paid, payout you have taken, then we suggest you take a copier. A copier. It is another software which is for $112. It's a one-time fees. The copier allows you to copy your trade to the other accounts. In that way, you don't have to trade each account separately. You can trade one account and it is spread on all of them. So in one account you made 50 and that's, you have 4 PAs, that's like $200. On the copier, you have to apply the copy. Yes, yeah. So like you make 100 in one account, multiply by 10, so you got $1,000 total. So this is how the leverage or the multiplication comes. So here in the first account, you draw about $500. Now with 10 accounts, you draw $5,000. Then you open in other accounts, other funded accounts like Apex or Pordia or Take Profit. They're all similar, different rules, but in the copier, you can put it all those accounts. So one trade is multiplied so many times. So this is how you multiply. Good. Now, have you got any EA account right now? No. Okay. Starting pretty soon. So in EA account and the PA account, there is a bit of difference. Here, you want to complete this test as soon as possible. In the PA account, But it still requires 10 days, right? Yes, yes. Not before. yes. Okay, so it depends. There are different companies, right? So it depends. For example, Bullnox don't care like you are passing in 10 days or 8 days. Even you pass in 1 day, they will promote you PA. There we go. But in PA, the same thing. You have to trade at least 10 days. Yeah. You have to be more disciplined. You have to be consistent.
That is why they put a limit of 30%, like 450, not more than that. So they want to see your consistency, because they don't want, by luck you got so much. And then in the PA, you are not allowed to trade on high impact news. Because in the high impact news, which is the red one, the market moves too much. So they cannot judge your quality of trade. They don't allow you to trade in. You have to wait, 15 minutes at least when the news is announced. Then wait for 15 minutes, then you start trading. Not that you put the trade and the news comes and it shoots up and you make $1,000. No, they will not allow it. Other thing is you have to close all your trades by 4:30, because 5 o'clock the market closes. Otherwise, if you don't close and the company closes your account is gone. Fourth, कर सकते हैं, just as a safety net, we say. Yes, that's why. Yeah, that's why for the. Yeah, that is why for the EA account holders, we don't encourage them to go to the last minute, because the trade is open and you're waiting. I will get the profit, and the time passes. And the internet goes off. You can't close the trade. The company will close it. Your account is gone. So half an hour is a safety net for you. They said 4 o'clock, you close it. Yeah. They suggest. Yeah. In the videos. Yeah, that's why, because again, that question comes, okay, we can trade up to 5 o'clock. Yes. Once you get experienced, you know what's happening. Once, then you can do all those things. So, but in this one, there's a time pressure on you to complete the test as soon as possible. You can be ruthless, you can be overactive, whatever, just to get the target. You can be rash, irrational in this one, but in the PA, you don't have to. So, if you blow your account, Yeah. EA1, Yes. you blow. Yeah. For any reason. Yeah. Time goes out, paise nahi bane, Huh. for any reason. Yeah. So the account is gone. Yeah. फिर नए से आपको 150 है या 50? $50. You pay another 50 to get another account. Yes. And you have another time frame Yes. to finish it. Yes. Once you finish all that, you got a PA. Yeah. When you got a PA, then you start stints again, 1500 whatever. Yeah. तो फिर उसके बाद आप अपना वो उसके ऊपर बनाएंगे तो वो आपके. Another thing to note is if your account is blown, cancel that account. You have to physically cancel it. If you don't cancel it, they suggest you to reset the account. You think it's okay, I will come back to the original, but then the fee is more. It's not $50. So don't let that happen. If the account is blown, cancel it. Go to the website, cancel it. So in this one, you can trade minis, whatever. Up like in 25K account, you can trade up to 4 minis and 40 micros. Each mini is 10 micro. So it's the same thing, 4 mini or 40 micro or a combination. So in this one, you can trade mini, but when you come to the PA, not more than 1 or 2 micro. Never a mini in the 25K account. Bigger account, yes, you can afford. But micro trade only micros in the PA. Because if you make a loss, your account is not blown off. Yes, sir. 25K वाला अकाउंट है, ठीक है. हमने डिफरेंट मार्केट्स के एरियाज पे लगा दी है क्वांटिटीज, ठीक. ये एक बात कर रहा हूँ. 3 तो हम मिनीज ले सकते हैं. तो हम 3 ऑर्डर लगा सकते हैं या हर मार्केट में अपने ऑर्डर लगा के छोड़ दें कि जो पहले हिट हो गया तो वो काउंट हो.
मतलब आप The answer is yes and no, in the sense, then you have to close the other account because you should not exceed $450. ये की बात कर रहा हूँ हाँ, EA में भी. लेकिन उससे पहले भी हाजी साहब आपको कॉन्ट्रैक्ट 3 अलाउड है। हाँ. आप 3 कॉन्ट्रैक्ट में या टोटल 3 लगा सकते हैं। अच्छा टोटल आप एक लगाए नैस्डैक में, एक ईएस में, गोल्ड में, आपकी खत्म होगी जो पोटेंशियल था आपकी अकाउंट में। Yeah. या आप इकट्ठे 3 लगा दें नैस्डैक में तो Yeah, अलाउड ही नहीं। because the point comes, all the three indices or whatever, gold or all the trade will not come at exactly the same time. So once one trade is done, you can close the other one. एक अकाउंट में डजंट मैटर आप 100 गोल्ड से बनाए, 100 नैस्डैक से बनाए, 100 ईएस में, टोटल 450 से ज्यादा अलाउड नहीं है। कमोडिटी जो इन अकाउंट नहीं, इन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो आपको आस्ते आस्ते चीजें समझ आती है। बनाने 450 दूसरा जो है ना, another thing is ब्रेकआउट हाँ, ब्रेकआउट का बताता हूँ. So what is a breakout? Breakout is something which breaks from the routine. So suppose the market is moving like this. Okay. So you have got those bars. Now, so you can also see here like higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. So a higher low comes here, and also you see the mid band is moving. So whenever you know when it goes down here, the black candle comes in here. As soon as the black candle is formed, you see a line. Just a quick question. What is that black candle? Black candle is when it turns. What is that black candle? Black candle is like What does that mean? black candle is when the line is turned. Okay, your direction change कर दी अपनी। Okay, कैंडल तो बाद direction change करनी है। Sure, वो आएगी। Okay. This is a black candle. This is a black candle. Whenever you change the direction. Yes, yes. There is certain. So अगर ये ना भी हो तो हमें पता है direction change हो रही है. What is the meaning of that? ठीक है, हम समझ गए हैं. This is the. Change होगी, black आएगी. अगर वो ना भी आए तो. This is the way. देखो अगर वो पहली लाइन नहीं आती, मान लो पहली first. हाँ जी. ठीक है, पहली लाइन नहीं आती, but it's still coming down. We see the red there. हाँ, ऐसी का थल्ले आ रही है. ना भी काली आवे ताम से उनको पता थल्ले ही आएगी. नहीं. एक चीज कहने को चेंज ना अनचेंजेबल है। This is. बैक करना तो की करोगे पहला? रोकोगे मरीजी की नहीं? हाँ, मारा ही रोकना पड़ेगा। नहीं बैक करोगे ना? आ वही चीज है। अच्छा। These are like the stoppers. ठीक है। I want to make a turn. So black candle shows the turning. From going up, it is not turning to down. एक प्राइस आ रही थी, उससे प्राइस क्लोज हुई, नई प्राइस खुली, उन्हें अगले जाके प्राइस क्लोज कर, फिर उसको नहीं खुलेगी, फिर ऊपर जाके क्लोज करेंगे। क्लोजिंग प्राइस एंड ओपनिंग प्राइस ब्लैक कैंडल। जो ब्लैक कैंडल आ रहा है तो फिर वो रंग भी चेंज हो जाता है। जितना रेड आ रही थी, ब्लैक आई ग्रीन होगी। ठीक है? Okay, so the breakout. Just see this part of the chart. I'm not saying SRES, but this is going up and then it goes down.
When it goes up, there's a dotted line here. A line is formed from the last when it turned here. There's a dotted line ऊपर हरी आ रही है अगले दिन अगली घंटे like this one here. You see? देखो Yeah. ग्रीन आ रही है Now, when this turns from here, again the line comes here. Can you see this? Okay. So I'm giving you the example here. So a line is formed like this. The line is formed from the last candle, the black candle. So when this line is formed, now it can go, when it turns, it can go further down or it can reverse and again cross it here. So 5976 was the reading here, right? 5976. As soon as, now there are two possibilities, when it can go above this or it can go below this. This was the line, it can go below this. तो वो लो से जब वो नीचे ज्यादा आई तो ब्रेकआउट हो गया एक ये breakout हो गया, एक ये breakout हो गया. हाँ It can go. So you can put on both the sides. बताओ अंदर बैठा हूँ सॉरी सर मैं सर देख लूँ आपकी ऑडियो जा रही है आप आइए ना सर. नहीं बस सिर्फ हो गया हो गया सर. so that's hi नहीं ब्रेकआउट सर इनको जरा समझना है. चल ठीक है बताएं कंटिन्यू सर आपसे अच्छा कौन बताएं. आप टीच करेंगे आपके नॉलेज में इजाफा होगा उनको भी फायदा होगा मैं तो आपसे सीखता हूँ ना. Okay, so that is the breakout. प्रीवियस लो लो या हायर हाई को Exactly. बाकी तो वो ब्रेकआउट कहलाता Exactly. Exactly. That is the breakout. The other technique is SRE. But this is the breakout. When it breaks the previous high or breaks the previous low. So that is the breakout. But in this one, make sure the take profit target should be very small. Yeah, 4 ticks or 4. जाती है लेकिन why take that risk? हाँ जो भी है आप कर सकते हैं. So that's why, you know, so but it's not that you can make sure, you're not sure it's going to go very long. और फिर ये जो बोलिंजर बैंड और आरएसआई है ये साथ साथ ही चलेंगे ना मतलब This will give you an indication that if it is above 80%, so now it's the probability it will go down. So the down breakout is more possible, probability is high compared to going up. Right? Similarly, when it is down, then the probability of going down is more. No, going up, sorry. इसलिए देखें जब यहाँ आया ना ये less than 20, this is the point, it went up. It will not go further down. सर दो एरियाज के नंबर भी होते हैं जी मुझे ये पता लगा कि अगर तो आपकी स्विंग जो एक ही गो में जा रही है और एरिया के पास पहुंच गई है ठीक तो जो फर्स्ट नंबर है वो वैलिड हो जाता है अगर वो ले रही है रिट्रेसमेंट्स लेके जा रही है तो फिर आप ऑर्डर दूसरे नंबर पे लगा लो टॉप वाले इज इट मेक सेंस it does make sense, but it's not always the case. It's not always the case. Yeah. So the thing is, you should wait for it to reverse. If it is going up, the first point comes where it should reverse. all the way 65 तक गया without any Yeah. retracement ठीक है Yeah. और लेकिन 15 के बीच में इसलिए लेकिन 30-20 का जो था चार्ट वो ऑल द वे गया और उससे पहले जाके 60 को टच किया 2-3 पॉइंट्स का रिट्रेस किया फिर उसके बाद वो 70 ऊपर वाला नंबर फिर 77.5 और फिर 77 लास्ट था. It depends on the time on which you're trading. It is early morning, like 9:30 to 11:30. Market is hot or there's a news, then it can penetrate to the next level. आपने मतलब नंबर
फर्स्ट नंबर कब लेना चाहिए उसका सेकंड नंबर कब लेना चाहिए? उसका यही है, you should just wait for the black candle to form, because only then you know it is reversing. Like the band was here, like the area was here. You don't know it's going to reverse or not. You can only be sure when a black candle is formed. The moment black candle is formed, which is after 4 ticks, then it will go down a bit. Yeah. Of course, you have to put the stop loss in all the trades. It can reverse and go back. Years के अंदर समय प्राइवेट 5 SL और 5 TP तीन दफा होता है 5 SL हिट करके वो फिर रिवर्सल 10 पे जाती है, रिवर्सल लेके वो अपना TP देके हो जाता है। हाँ, इस SL हो चुका होता है। हाँ, तो इसलिए just wait for the candle to form, black candle to form. Sometimes the black candle is formed, it goes there, and then it makes a divergence, and then it comes down. So wait for that also. फ्राइडे को भी 70 लगा भी पूरा 4 देखिए, उससे पीछे भी 19 लगा। नंबर मैं पूरे हफ्ते के नंबर याद रखा। तो ईएस तो और नैस्डैक में अगर हम माइक्रो में है ना, मैं जनरली स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं पड़ा। आपका क्या क्वेश्चन था? Upside and downside black candle. Upside black candle and downside black candle. Because see, what is this? This is going upside. So when the black candle is formed, now it is the downside. So when it is downside, now it is upside. This will form not right away, and then it will take 1, 2, 3, 4. रिवर्स हो जाती है, ऊपर बंद हो रही है, फिर वापस दोबारा नीचे प्राइस खुल रही है, नीचे बंद हो रही है, फिर नीचे फिर दोबारा खुली है, ऊपर जाके फिर बंद हो रही है। But you have to see the black candle is not formed right away, like it is. It's not formed right away. When this green is formed, 1, 2, 3, 4, then you see the black candle. मैंने वीडियो में देखा था कि when it comes low and high, after high, then you can take the. Yeah, that is to place the order. Yes, that is Yeah, to place the, that's it. and वहाँ भी लिखा हुआ था कि अपसाइड कैंडल हो गई है डाउनसाइड, इसलिए मुझे लगा कि शायद डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती या होती है तो कैसे पता चलता है, तो क्योंकि इसमें क्या लिखा होता है? सॉरी, मैं यहाँ पे आपको जो आपने पढ़ा ना, वो बड़े लेवल के चार्ट पे पढ़ा है। ये जो चार्ट है ये छोटे टाइम फ्रेम के, अगर आप 30 मिनट के चार्ट पे चली जाएं, वहाँ पे जो डायरेक्शन डिफाइन हुई है वो फिर ट्रेंड उसी तरफ ही जाएगी। Like Sunny, you know this concept, right? Because this guy is trading with me since like 1 year. So now these guys understand which way is market trend right now. अगर तो मार्केट का ट्रेंड कैंडल ओपन हुई है ऊपर की, तो हम आके पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट बायर्स की है। तो वो 30 मिनट के चार्ट की जो कैंडल है, आप उसकी बात करती हैं। ये छोटे टाइम फ्रेम पे छोटे टाइम के साथ कैंडल ओपन क्लोज हो रही है, तो वो जितना आप डीप आएंगी वो आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाएगी। देखिए, ब्लैक कैंडल का कॉन्सेप्ट ये है कि हर ब्लैक कैंडल प्राइस रिवर्सल हो जाती है। Yes. अगर ऊपर जा रही है ब्लैक कैंडल आ गई तो नीचे शुरू हो जाएगा, अगर नीचे आ गई है तो ऊपर हो जाएगा। तो ये सिर्फ रिवर्सल पॉइंट, बेशक वो 15-10 हो या 1 डे चार्ट हो, जहां ब्लैक आया वहां से ऑपोजिट शुरू हो जाएगा। लेकिन you have to keep in mind, like what you mentioned, you look at the trend. If it's an uptrend or a downtrend, the candle will form, it will go down, but not much to reverse again. It may touch the mid band and go back. So, वो 30 मिनट्स की कैंडल्स है ना, वो लॉन्ग टर्म है। Yes. ये एक ब्लैक कैंडल प्राइस डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो नीचे आ रही थी, ब्लैक कैंडल बनी, ग्रीन हो गया, नीचे फिर ऊपर चलेगी, तो यहाँ ब्लैक कैंडल बन सकती है ट्रेंड के अंदर भी और अगेंस्ट भी, ये फर्क है। जो 30 मिनट के जनरली या बड़े चार्ट्स हैं उसमें आपकी बनती है लॉन्ग टाइम पे, यहाँ है, यहाँ बनी, फिर 30 सेकंड के बाद नीचे ब्लैक कैंडल बन गई। तो रूल ये है, जो बेसिक रूल बता दूं, दोनों चार्ट ग्रीन है ना, आपने बाइंग में रहना, दोनों चार्ट रेड है, आपने सेलिंग में रहना। ये रूल तोड़ना ही नहीं है बिगिनर्स के लिए। और कहाँ से उठाना, मिड बैंड से, बस इसको मास्टर कर लें, दैट्स वेयर द प्राइमरी। another thing that will help you, how you know the trend is up or trend is down.
When there is some like higher high comes after. तो हायर हाई लोअर लो ये आते रहते हैं, बट द ओवरऑल ट्रेंड इज इट अप और डाउन. देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट. वन इज गो टू FinViz. You know FinViz? Go to FinViz website and go to maps. It will give you like the S&P, all those 100 S&P 500 companies, and it's showing red or green or black. If all is green, market is up. All is red, market is down. Another thing is go to Market Watch website. When you open that, go to under the US, you know, there are different S&P, and under the US, look at VIX. If the VIX arrow is showing down, the market is up. If the VIX arrow is showing up, market is down. So you will know the overall at that time, what is the direction of the market. ठीक है सर? Thank you. Thank you. Thank you. Oh, sorry. ये तो मेरा है सर. All right, now I'll answer any funded. Haji. Haji. इससे पीछे मतलब कुछ वो कैटल्स बन गए जो ठीक रेट है और डॉजीज. हाँ जी, यहाँ पर आपकी प्राइस नीचे जाने की कोशिश होती रही है ना. अब यहाँ मैं आपको इसकी टेक्निकल रीजन बताऊं, यहाँ ये क्यों हुआ. आप यहाँ आई एक बताऊं, प्राइस ने 70 का हमारा एरिया था ना, ये 70 था बाय द वे. आपने 70 से सेल किया, आपने 3 पॉइंट लिए. 76 अब होगा ये. मैं आपको अगर कंफ्यूज करना है ना अपने आप को, आप टेलीग्राम में आ रहे हैं, टेलीग्राम में आप आ चुके हैं. हाँ जी, हाँ जी. नहीं लग सकता. ये नैस्डैक तो है नहीं है, तो ईएस की बात हो रही है. ये ईएस अब होगा ये. क्या आप टेलीग्राम में आ जाएंगे? नहीं, मैं भी नहीं, वो नहीं. ब्लैक कैंडल तो नैस्डैक में नहीं उस तरह लगना यार. वो 30-20 की ब्लैक कैंडल पकड़ना चाह रहे हैं नैस्डैक में, वो नहीं पकड़ी जाती. 30 मिनट में हो जाएगा, 30-20 में नहीं होगा. दो डिफरेंट चीज, दो बहुत डिफरेंट फास्ट. ओके, अब मैं आपको एक कंफ्यूजन की बात बताऊं. आपने कहाँ कंफ्यूज हो जाना है. आप लोग टेलीग्राम में आ रहे हैं, अलर्ट क्या आना है, नैस्डैक कमिंग टू 20,490. आपका माइंड क्या कहेगा, ये R2 है, यहाँ से सेल करना है. प्राइस गिर रही है, S2 पे आना है, यहाँ से बाय करें. उस वक्त आपको कोई चार्ट नहीं दिखना, कोई ब्लैक कैंडल नहीं दिखनी. आपको जो एरिया है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में लेना है और ख़त्म करना है. वो अब इधर भी कंप्यूटर ने एक प्रेडिक्ट किया है 70 का नंबर और 76 का. जब एरिया ट्रेड होता है उसमें आप एक्स्ट्रा कैलकुलेशन डाल सकते हैं कि मैं यहाँ, अब देखें यहाँ वाली ब्लैक कैंडल आपका स्टॉप लॉस चांसेस कम है. ये बिल्कुल ब्लैक कैंडल के बाद आपने एरिया लिया तो आप ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे. लेकिन ट्रू एरिया ट्रेड की डेफिनेशन ये है कि आपने उस पॉइंट पे मार्केट ओवरबॉट है, आपने सेल करना है. इस पॉइंट पे सपोर्ट बनी हुई है, यहाँ से बाय करना है. तो कंप्यूटर ने ये आपके लेवल्स प्रिंट कर दिए हैं. तो एरिया ट्रेड ट्रू डेफिनेशन ये है कि आपके ये हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नंबर्स. बेशक वो नैस्डैक के हैं, ईएस के हैं, गोल्ड के हैं, क्रूड ऑयल के हैं. आपने पहली अटेम्प्ट में लेना है और वहां से लॉन्ग या शॉर्ट करना है. ठीक है, छोड़ दें, खत्म हो गया. आप देखें 446 होता है और 450 होता है. मैं कह देता हूँ एरिया डन है. अब गैप पे डिपेंड करता है.
देखें आपका गैप छोटा है तो कई दफ़ा वो नंबर था लास्ट 20 का गैप था, मैं उसको इनवैलिड कर रहा हूँ कि यार अब वो उसने एरिया से रेंज आ गई ना। असल में मार्कर इसका देखता हूँ यार, देखें ये आपकी रेंज है 70 से 76। अब कंप्यूटर ने आपको कहा है कि यहां तक चढ़ गई ना प्राइस तो इसको बाउंस लेना पड़ना है। कई दफा हमारे साथ इतनी अनफॉर्चुनेट होता है वो 69.75 से चली जाती है। पहला अटेम्प्ट ये हुआ, कल मैं बात कर रहा था, फ्राइडे का है, कि यार प्राइस 67 से, और सो मेनी पीपल रोट मी, ओ माय गॉड वी मिस्ड, यानी कि वो प्राइस आई नहीं। एग्जैक्टली 10 मिनट्स के बाद 70 आई, 70 के बाद मैंने वो देखा 67 पे आई, 3 पॉइंट आपके डन हुए। फिर उन्होंने कहा यार मैं ऊपर वाला एरिया ले लूं, मैं कहा हाँ 76 आप लें। वो 76 से गई है 77, और फिर वहां से जो ब्लास्ट आया, क्योंकि लास्ट 5 मिनट्स में यूएस की रेटिंग गिर गई। अगर आप देखें ये ब्लास्ट पता क्यों आया, यूएस डाउनग्रेड हो गया उसकी रेटिंग। सीएनएन ने पब्लिश किया कि यूएस की क्रेडिट रेटिंग नीचे हुई है, वो 76 से 38 पे आई। अब तो मैं आपको अपना बता दूं, ऑनेस्टली कई दफ़ा ये होता है, मैं माइक्रोस के साथ जाता हूं, अब एक्सपेक्टेड हाई है यार। आपको पता है सिग्निफिकेंट क्या थी 70 की? इवनिंग का हाई था यार। अगर आप इवनिंग का एरिया देखते, रात को खोलते, तो 70 का नंबर और 490 का नंबर एक्सपेक्टेड हाई का इवनिंग का था, नहीं टच हुआ, तो उसने अगले दिन वैलिडेट होना है ना। तो बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, जिसने भी 70 से सेल किया दे वर लाफिंग, दे सेड के यार सारा एरिया आपका। तो अब होगा ये कि आपको यूज टू होना पड़ेगा चार्ट ना देखने का, एक्सपीरियंस यूजर बाय द वे, नॉट द अलर्ट है। ट्रेडो वेट खुला हुआ है, रिदमिक खुला हुआ है, आपने आए हैं, आपने देखा है, आपने अपना ट्रेड लिया, अपना एसएल लगाया, टीपी लगाया, डन किया, ताकि हमने उस तरफ जाना है कि ठीक है चार्ट सब कुछ है। स्कैल्पिंग के लिए ये चार्ट बहुत अच्छे हैं, आपने 1 पॉइंट लिया, 2 लिए, मिड बैंड लिया, सब कुछ, लेकिन इवेंचुअली मैं चाहता हूं एवरीबडी शुड एंड अप देयर on these support and resistance, because more people who are buying and selling at our levels, it helps us, उसकी पावर बन जाती है ना। तो आप यहां लगाएं, ठीक है। अब अगला रेंज देखें 600 है। अब एक सिर्फ फॉर आर्ग्यूमेंट से सोचते हैं आपने 5 माइक्रो लगाए, 5 माइक्रो आपने लगाए, आपने कहां से लगाए जी? 490 से। $10 का एक माइक्रो है, वो चढ़ना शुरू हो गया आपके खिलाफ। हम लोग आपको क्या कहते हैं? 35 पॉइंट स्टॉप लॉस, ठीक है। It's an ideal number, meaning that you have lost $350, let it go. So that means from 490, what is 35 point? 500 and 525 तक मैक्सिमम आप उसको रखो। अगर कोई किसी ने 500 पे लिया, 535 पे लगा दे। हेलो जी। So easy, why experiment this sometimes? Generally you can average your position up or down in a negative trade अगर आप माइक्रोज में हैं। आपने यहां से 2 3 4 माइक्रो लिए, अगर आपके अगेंस्ट गई, आप देखते रहो यार कि मेरे अगेंस्ट इतनी चली गई है, तो मैं इस पॉइंट तक मैं अगली लॉट फेंक के उसको एवरेज करके निकल सकता हूं। सो फॉर दोज दैट प्ले Nasdaq, दे नो हाउ टू डू एन एवरेज, राइट। अब एवरेज ये नहीं करनी 490 पे लिया, 92 पे ले लिया, 95 पे ले लिया, पता लगा कि 500 तक जाते जाते 10 लॉट हुए हुए। 490 पे 5 माइक्रो अगर फेंचे तो अगले 600 पर फेंचे, 550 पे तो फेंके। तो एवरेज का जो सबसे बड़ा आपको बेनिफिट ये मिलेगा, आपने 490, आपने कहा यार चलो मैं ना 500 पे सेल करता हूं, 5 माइक्रो 5 MNQ, ये बना $10 पर लॉट, चढ़ती गई, प्राइस आ गई 600 पे। 600 आपके अगेंस्ट कितनी गई है? $500, ठीक है। या फिर आप अपने डिसिप्लिन से रहें, आपने कहा यार मैंने और नहीं लेना, या आप 2 माइक्रो से करें, 3 से करें, लेकिन अगर आपने यहां एवरेज करके 5 MNQ और सेल कर दिए, बिकॉज यू कैन सेल ऑन टॉप ऑफ द सेम ऑर्डर, एक ही डायरेक्शन में, आपकी एवरेज आ गई 10 MNQ पे 550। Unless you are experienced, you can get out of any bad trade. आपको पता है कि यार मैं यहां से एवरेज करूंगा ना तो मुझे निकाल जाएगी, लेकिन एवरेज में आपने सिर्फ 0 पे बाहर आना होता है। लोग बैठे होते हैं कि जी अब मैं वहां तक ही बैठूंगा जहां से एंट्री ली थी। मैं पर्सनली कई दफा करता हूं, यहां लिया,
यहाँ लिया, एवरेज यहाँ किया, यही इतना ही लॉट साइज यहाँ से फेंक दिया। पहले मैंने 5 से शुरू किया था, ठीक है, वो बढ़ता गया 6 से, यहाँ मेरा 500 हो गया माइनस, ठीक है, एवरेज करके यहाँ मैं ब्रेक इवन पे निकल आया, 5 माइक्रो यहाँ से फेंक दिए, सेल ही किया ना, क्योंकि नीचे ही आनी है ना। तो यहाँ मैं 0 से बाहर आया, यहीं से 5 MN की, अब मेरे पास ये सारा प्रॉफिट है, लेकिन अब मेरे अगेंस्ट फिर जाए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो चढ़ती गई 650 पे मैंने फिर किया, 600 पे मैं पूरा दिन 2-2 माइक्रो से 3-3 माइक्रो से एवरेज ही खेलते रहते हैं, क्योंकि फायदा ये होता है 2 MNQ बहुत पावरफुल है। आपको पावर नहीं पता 2 MNQ की। 2 MNQ जितनी स्पीड से है ना, 5 ना लें, 2 ले लें, 2 ना लें, 1 ले लें, जाने दें उसको खिलाफ, कितनी भाग लेगी, उसको शूट डाउन करके आप लाएं, फिर वहीं इसी प्राइस से दूसरा पैसा। एक आध दिन हुआ पिछले 6 माह में, वो हर एवरेज पे नहीं रुकी, इंटरेस्ट रेट था 1000 पॉइंट गिर गई, या कोई ऐसे दिन आते हैं कि आप जिस पॉइंट से रिवर्सल चाह रहे होते हो नहीं हो रहा होता, लेकिन एज लॉन्ग एज आपका लॉट साइज ठीक है, आप यू शुड बी ओके, राइट। सो बिफोर टेक्निकल आई वांट टू एक्सप्लेन टेक प्रॉफिट। आपका क्या क्वेश्चन था टेक प्रॉफिट का? ये नास्डैक का पूछ रहे थे, हाँ। कि नाइट सेशन में ब्लैक कैंडल ले सकते हैं? देखें, हमने लेके देखा तो काम कर रहा है। नाइट सेशन क्या है? रात का लो है, तो ब्लैक कैंडल किस चार्ट के हिसाब से नहीं ले सकते? कैसे लेंगे यार? तो आप प्राइस पे लेंगे, कैंडल तो नहीं ले सकते। जिस स्पीड से वो आ रही होती है, आप कैसे कैंडल पकड़ेंगे नैस्डैक में? आई डोंट नो। दो पॉइंट तो देता है। नहीं सर, वो इतने के लिए इतना सर जरूर देना नैस्डैक में 2 पॉइंट के लिए यार, के नैस्डैक के लिए 2 पॉइंट ही लेने हैं, तो आप पता क्या करें? नहीं, बहुत उसको ओवरबॉट हो लेने, वहां से पॉइंट जो हैप्पी करवाता है आपको, फुली ओवरबॉट ओवरसोल्ड कर लें, वहां से 5 निकल आते हैं। तो मैं ये तो कि आसान ये है, रेदर देन कि आप वो नाइट सेशन की ब्लैक कैंडल पकड़ें, आप ओवरबॉट ले लें, वहां से 2 पॉइंट क्या, बल्कि हर मिड बैंड पे 2 पॉइंट निकल आते हैं। आपके लिए एक ही चीज है, एरिया पे बैठ जाएं और एरिया करते रहे, या मुर्ताज के साथ आके 2 मिड बैंड ले लें, तो आपका 100 का टारगेट पूरा हो जाएगा। एनी क्वेश्चंस ऑन एनी फंडेड अकाउंट, किसी के बारे में भी हो, पर्डिया हो, फंडेड हो, लेजेंड हो, बुलनॉक्स हो? डे ट्रेडर ने 5 मई को रूल्स चेंज कर दिए, नाउ बफर बढ़ गया डे ट्रेडर्स ने। तो बाय द वे, ही इज जे, ही इज द वन वी ऑल, द फेमस जे, राइट? So but he's a bit camera shy, you can talk to him individually. He will say one thing, हम जी सुनते रहते हैं एरिया कब आएगा। अब तो यही एडवांसमेंट हुई, 1 साल लग गया हमें इस प्रोजेक्ट को यहाँ लाते लाते। अब आपको अलर्ट आएंगे, आप ट्रेडोवेट खोलें, प्राइस देख लें, आपको अलर्ट आ गया है, आप वहाँ पर अपना स्टॉप लगा लें, टीपी लगा लें। और मेजॉरिटी यूजर्स जो हैं फंसते कहाँ हैं? लॉट साइज खराब होता है। ऑनेस्टली 1500 के अकाउंट में उस दिन मैंने एनी डेस्क किया, तो फटाफट लेडी ने तेज बना रही थी, मैंने कहा ये आपने 1100 बना कैसे लिया? मैंने एनी डेस्क किया, 1500 के अकाउंट में 4 मिनी लगे हुए थे, तो वो मैं कहा यार ये थोड़ा सा ना, तो 5 माइक्रो में भी अगर 1 मिनी बहुत है। आप हमारे ये ओपन चैलेंज है, आप इस फ्लोर पे आए, आपका 15 दिनों में आपका 1500 वाला ना हुआ पास, तो लाइक वी हैव टू हैव अ डिस्कशन विद मुर्ताज कि यार क्यों नहीं पास हुआ। होता ही है कि मैं पूछता हूं उनसे, मैं कहता हूँ कि यार, वो कहता है यार मैं 150 बनवा चुका हूँ, वो घर जाके पता नहीं खुद ट्रेड शुरू कर देते हैं। मैंने कहा तो और दूसरी बात ये है कि आई आस्क हिम कि यार you now have to start walking around and start slapping people कि यार ये क्यों कर रहे हो? तो that's the only reason they will figure out, because if we are giving, and we were just having this laugh inside, open challenge anywhere, if this video goes online, हमारा सेटअप पूरी दुनिया में जैसा इस प्राइस में कोई नहीं दे रहा। आपको 2 फ्लोर, आपको जूम, 3 जूम के दे रहे हैं, आपको एरियाज देते हैं 15 मार्केट्स के, आपको लाइक हैप्पी 1-on-1 करवा देता है यार, उसका रोज पढ़ा करें पाजी, 70 डन, 40 डन। अच्छा ठीक है, फिर आप अपनी बांगें दे दें उसके हाथ में, उसका हाँ,
लेकिन फिर भी एंड में पे आउट नहीं आ रहे, फिर किसका कसूर आ रहा है? हाँ, लेकिन और डिसिप्लिन हो जाए, राइट? So any of not any questions, we can wrap this up. इसमें ताकि it's a Victoria Day thing, and ठीक है जी, everybody satisfied until the last question, last breath. So soon, what the changes that we are making, just to kind of tell you where we heading, because our innovation never stops. ऐसे तो नहीं है ना कि हमने खत्म हो जाना है, या अब हम लोग किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? आप जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन किया है, आपको अभी हफ्ता तो खाली टेस्ट मैसेज ही आते रहेंगे, क्योंकि वो टेस्ट भेजते हैं, टेस्ट करते हैं कि मैसेज डिलीवर हुआ। आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया, एग्जैक्टली मिडनाइट पे वो हमारा वो सॉफ्टवेयर रन होता है। जो जो एक्सपायर्ड होते जाएंगे ग्रुप से निकलते जाएंगे, फिर उनको जाके मुझे व्हाट्सएप नहीं करना इस नंबर पे 647 पे कि ये मेरा टेलीग्राम आईडी है जी, मुझे ऐड कर लें। आपने सिर्फ स्टार्ट लिखना है, तो वो आपको दोबारा इनवाइट लिंक भेज देगा। अगर आपकी मेंबरशिप ओके है, देन इट विल पुट यू बैक इन, but it's okay. Second thing is, the next big target for our company is to move all of this to TradingView, because there's a huge demand for these charts to go on, especially areas to go on TradingView. So that's a 2-week project जिस पे हम काम करेंगे, और hopefully within June के mid तक TradingView भी launch हो जाएगा, ताकि आप ये सारा कुछ TradingView पे भी कर सकें। Happy we'll start doing these presentations very soon, so I get some time off to do some other development work. So third office is opening in Brampton, and we have seen a few things near airport, and so Jatin and we have Sunny Harneet, so he's going to take care of it, because a lot of people want to come from Brampton, because 98% of our, I wouldn't say 98, about 80-85% community is for Punjab, India. That's why we're kind of targeting that audience. So this is what's working in development. And so next Saturday, there's no presentation here. Then we're back here. So funded ke koi rule change नहीं हुए. Take profit still gives you, sorry, I didn't see you. Shutad bhai, kya haal hai? So we may have a social media influencer doing a bit of a work on our kind of refining our whole social media platform to make it up to date, and because we have great content, we just don't have time to manage it in-house. So Take Profit still has a promotion. If you're able to do this, your EA in 1 day, 1 month, PA has no fee. Bullnox is running for $15. Day Trader has changed their buffer zone. 2500 No, but they changed the minimum balance. Yeah, buffer zone they changed. Per dia is still great, but it's but so far amongst them all, the one guy to milk, he starts laughing because it's the, and Jatin too, it's the Take Profit. Once you are ready, for new users who have joined, your goal to make money should be around 3 months. First, you have to learn the basics. It's not like Hashmi Saab or Jay or Murtad or Mansoor that I gave them an easy route. You guys are the lucky batch. When he joined, there was no funded company. You had to wire $1,500, then experiment with your own money. You're going to do at least 2 weeks of demo. Then we're going to put you slowly into one evaluation and see if you can make $100 a day, 100 to 200 to 300, and then one funded 200, and then you, right now the number one company is Take Profit, allows you to buy it for 105 and then gives you a daily payout. So Friday I made $291, 6 p.m. me and Jatin both, he has more accounts, we withdraw the money. Per dia gives you daily payouts. Bullnox, I'm on my third. So yes, Bullnox, somebody asked me what happens after third payout. So I like to always show my accounts, because it's not BS that I'm doing all of this, right? सर लग जाए यार, और ले लेंगे 15 का यार, लग जाए यार, नजर भी लग ही जाए तो इट्स ओके। अगर यहाँ से नजर लगी ना, आपका कसूर नहीं है, मेरा है, कि ट्रेड तो मैंने डालना है ना, तो नहीं मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, नहीं वो अकाउंट दिखा रहा हूँ जिसपे नजर लग भी जाए तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लग जाए $15 ही ना।
हमारे दोस्त सब पूछते हो करके यार सब पैसे बना रहे थे हम क्यों नहीं पैसे बनाते हुए बिल्कुल बनाओ मुझे नजर लगी है Okay. Why am I doing it here? I gotta do it here. Sorry, because I just want to show how things are in terms of the reality of it, the realistic approach. So I will log in right now here and just give me 10 seconds. So this is a Bullnox company, gives you an account for $15. You have a target. You have to make $3,000 and then you pass. You can pass it in one day. No problem. एक दिन में पास कर दें, कोई लिमिट नहीं है, ऊपर नहीं है, नीचे. आपके पास 2500 का मार्जिन मिलता है. $15 में $2500 से सस्ता मुझे नहीं मिला, जो निंजा में चलता हो. मेरा ख्याल है इससे सस्ता इवन एपेक्स पे नहीं नीचे आता, राइट? So let me just quickly, sorry. All right, it is my account. So let's zoom out a little bit. All right, so I have 11 accounts. They're all passed, okay? Because Bullnox only allows you to do 11 accounts. So when you pass 11, 3 move into PA stage. ये आपके 3 PA stage में चले. जब आप इसमें से पे आउट लेना शुरू करते हो तो आपको मैं अपनी पूरी हिस्ट्री बता रहा हूं कि किस तरह लेके चले. हम सारों ने कहा भाई $15 का लगा है, अकाउंट खरीद लेते हैं, ठीक है? Now let's look at reports of this account of the PA, ठीक है? So I traded this last account on 16th of May. That was Friday. How much money did I make? I made the best P&L day. It doesn't show the last. I think it was 16 was yesterday. So about $400 or so got made it. So I've been trading this account for 36 days. 36 days हो गए हैं और इस account का balance आ गया 4829. I am now allowed to take my third payout because look, it says I already have taken 2 payouts from this account. I already have received $3,000 from this account. So what was my investment? You know what? $148 plus $15. I invested less than $175. I traded my PA account for 36 days and I built it up. This is, by the way, 36 days in total, not like 36 days like from payout to pay. Look at this, says 11. From last payout to the next job. So let me clear the confusion how this works. I hire you, you have to come to work, and my condition is before I pay you, you must show up to work 10 days. But those 10 days can be any days, they're not consecutive. But I will not pay you until you reach a target or until you, so now I'm ready to receive my third payout out of this account. So my balance is 54,830 minus 1,500. I will be at $3,300 left on that account. Then I'm ready for my next payout. So I already have received, take a look at payouts. 15, 15, 15, 3 payouts. So $4,500 I've received here and 15 and $3,000 I'm about to receive in about 4 days. Wednesday को मंसूर भाई इधर बैठे. हाँ, हम Wednesday को हमने पे आउट डाला है तो ये मेरा ख्याल फ्राइडे को हमें दे देंगे, राइट? तो कितना 4500 प्लस 3000 और टोटल इन्वेस्टमेंट. जब मैं रेडियो पे बात करता हूँ ना कि कौन सा बिजनेस है आपको कि $150 में मुझे उसने $4500 दे दिया, 150 तो नहीं, आई वुड से 3000 तो दे दिया और अभी तीसरा पे आउट आ जाएगा और मेरी कॉस्ट क्या थी 150 plus 70 in terms of these exams, right? So and what will happen now after this account is ready for my first, this one is already done, so first payout is ready. ये देखिए जी 10 दिन हो चुके हैं इस अकाउंट को,
ये अकाउंट को, ये बल्कि मैं उनको लाइव ही दिखा रहा था आपके सामने, जब 5 माइक्रो शॉर्ट नहीं किए थे वो ऊपर जाके काफ़ी गिर गई. So my best trading day, I had $1,000. Now on 16th of May, yesterday I made 487 on this account. यार 70 पे प्राइस चल रही हो, अब क्यों नहीं 5 किया? मैं 10 लॉट फेंके, मीनिंग कि एक्सपेक्टेड हाई पे खड़ी है, राइट? और एक्सपेक्टेड हाई पे 5 माइक्रो से लिए, 3 पॉइंट इधर उठाए, फिर ऊपर 76 से ज्यादा फेंक दिया, 76. तो एरिया किया 487 डन हो गया. जा आप उसी वक्त बन चुके थे जब लोग आप पहुंचे, right? So what I'm trying to say is just keeping the track of these payouts. So what will happen next? Because I have received 3 payouts from one account, they will not give me any more payouts. They will combine all my accounts into a live account. So I will have 3,000 from this account, 3,000 from my second account. So now I'm getting a live account worth $9,000. How much did I spend out of that? So 15 times 3, 45, 140 times 3 plus 140. So my investment was less than $600. So I invested $600. I already received like almost $6,000, plus I got a $9,000 payout. And this all happened in 36 days. I don't know of any other business that is as crazy. Like I keep looking at these gentlemen and I say, you know what? A person can come from no trading background and he can witness. He's like, पाजी इस तो आने तो पहले बड़े तक्के खाते, और कोई सिग्नल बेच रहा है तो कोई चार्ट बेच रहा है. हमारी टीम में हम पूरी जेन्युइन एफर्ट कर जाएंगे, मेक श्योर करेंगे कि आप सक्सेसफुल हैं. एंड ऑफ द डे किस्मत, आपको किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलेगा और आपको वक्त से पहले नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा. तो लेकिन आप मेहनत करते जाएं, एवेंचुअली किसी ना किसी एक की अगर आप मास्टर कर जाए ना, एक चीज़ अगर कंक्लूजन में मैं ये कहूँ, आप मास्टर कर जाएं, $100 निकालना रोज. आई स्वेयर टू गॉड, $100 रोज में और $50,000 महीने में कोई फर्क नहीं है. $100 रोज का हो, प्रो अकाउंट हो टेक प्रॉफिट का, आपका रोज का $500 बनता है. पर ये नहीं है. तुसी 10,000 कढ़िया 2 अकाउंटों से 10,000 अप्रैल में 2 अकाउंटों से, वो रोज के 100 200 अगर आपका 500 डेली बन जाए और 20 दिन हो, 10,000 कहीं नहीं गया. ये मैं 5 इसकी बात कर रहा हूँ. कहाँ से मैंने प्रेजेंटेशन शुरू की थी? मेरा भाई जो हॉलैंड से आया था, गोल क्या है? $25,000 साल का कमाना है, एक्स्ट्रा सेविंग करने. उनको कहा भाई आप रोज के $50 बनाओगे, हम आपके 20 अकाउंट रखेंगे, $1,000 बनेगा. तो 20 5 100 बनता है. तो मेहनत तो छोटी करनी है एक तो, और अक्रॉस ज्यादा अकाउंट करनी आपके पास. हाँ जी, एक अकाउंट बना देंगे, लाइव बना देंगे. शाम को 9,000 का बफर है यार, मुझे फ्री मिला है, मैंने कुछ नहीं उसमें. नहीं, वो नहीं करते. वो आपको जब तक ये डेड ना हो ना, अगले 3 क्यू से आगे नहीं जाने देते. वो जो 8 मेरे पड़े हैं ना, ये जो अंदर पड़े हैं इसके अंदर, हाँ एग्जैक्ट. देखिए ये 3 मेरे बफर में पड़े हैं, ये मेरे 3 एक्टिव पी हैं, ठीक है. ये जो 8 पड़े हैं ना, इसका फायदा ये है, बुलनॉक्स में मेरी मंथली सब्सक्रिप्शन रुकी हुई है. हालांकि सिर्फ $15 के थे पर मंथ, लेकिन अगर ये मैंने सारे पास कर दिए कॉपियर से. मुझे एक थोड़ी सी ना नेगेटिव फीडबैक आई. मैंने एनबीटी का प्रोग्राम शुरू किया सिग्नल बेचने का, अप्रैल में हुआ, सारों ने कॉपियर बाय किया. आपको पहली तो बात है, कॉपियर 200 की जगह हमने 120 का दिया. $80 आपको कॉपियर चाहिए डाउन द रोड. कॉपियर ले लिया, दैट्स अ वन टाइम फी, $120 राइट कॉपियर. सो द थिंग इज, अप्रैल के शुरू में टैरिफ्स के मसले शुरू हो गए. ट्रंप ने मेरा एनबीटी का सिग्नल का मकसद ये था कि जहां मैं ट्रेड ले रहा हूं आप भी ले लो. मैं सिग्नल कर रहा हूं, आपको भी आ जाएगा, ठीक है. आपको भी एक सिखाने के लिए कि ट्रेड होता कहाँ है. नो प्रॉब्लम. आपने ऐसे किया. और भाई मैं ट्रेड क्या डालता, वो सुबह कह रहा था कि टैरिफ्स हैं, शाम के वो ट्रंप जैसे ही टीवी पे आता था, हमारी मार्केट कोलैप्स इस साइड पे या इस साइड पे. शाम को टैरिफ है, सुबह नहीं है. सुबह है तो चाइना के साथ नहीं चल रहा, चाइना को 185% कर दिया. अब वो लाइक सो ही वाज अ लूज एनिमल, लाइक जो है ना. सो इवेंचुअली देन अभी देखें वो पूरी मार्केट करेक्ट हो गई है. यार ये क्या बकवास है.
वो कहाँ जाती है नीचे तक 16,000 तक, और कब 21,000 फरवरी में ये 22,450 थी, मई या अप्रैल में ये 16,000 पे थी। तो ये इतनी वाइल्ड स्विंग्स हैं, क्योंकि अब हम लोग एज ए डे ट्रेडर्स एनालिस्ट सोचते हैं अगर ES मूव होती थी दिन में $20 तो क्यामत आ जाती थी। आज एक सेशन में 50 पॉइंट मूव हो जाती है। आप सिर्फ आए बैठे, मैं डैनियल से कह रहा था, मैं कह रहा यार ये तो बैंड से बैंड चलने लग गई है। मिड बैंड से 30 मिनट्स के मिड बैंड तक पहले होता था, 30 मिनट का मिड बैंड 3 दिन बाद आता था, और अब बैंड से बैंड चलना 60 मिनट में नैस्डैक तो रोज कर रही है, और मिड पे आती है। फ्राइडे कल खुली नीचे गई, फिर S1 से सीधा ही R1। सो इट्स ओके, वी आर लिविंग थ्रू एबनॉर्मल टाइम्स इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी, बट ऑल वी हैव टू डू इज मास्टर द आर्ट ऑफ $100। $100 में आप बनाएं। तो भाई को मैंने खोल के क्या दिया, मैंने कहा 3 बुलनॉक्स ले लो, 5 टेक प्रॉफिट ले लो, 1 पर डिया ले लो, ये 8 हो गए। ए लाइक में पैसे डाल दो, इनको पहले स्लोली पास करेंगे हम, और हमने $50 का टारगेट है 10 अकाउंटों में, रोज के $500 की आपकी सेविंग्स हो रही है। ज्यादा 2 महीने पे लग जाएंगे, पीए में 3 लग जाएंगे, और एक दफा आपका ये साइकिल शुरू हो गया ना टेक प्रॉफिट का, सर इतना मजा आता है कि आप 4 बजे पे आउट मारते हो, 4:37 पे अप्रूवल आता है, 5:37 में पैसे आपके अकाउंट में होते हैं। मैंने इवन पर्डिया वाले उससे स्लो हैं, राइट? लेजेंड वाले तो और भी स्लो हैं। लेजेंड विल डू समथिंग सून, दे आर मेकिंग देयर डैशबोर्ड बिग टाइम अप देयर। आई स्पोक टू ग्रेग, ही इज मेकिंग बिग चेंजेस इन लेजेंड। सो स्काई इज जस्ट द बिगिनिंग, यू जस्ट हैव टू एक आर्ट सीख लें 100 कैसे बनाने हैं। क्योंकि आप बिगिनर्स है ना, 100 से 200 का सफर अभी मुश्किल है आपका, राइट? लेकिन जो मीनिंग सेम अकाउंट के अंदर होता ये कि एकदम 700 बने होते हैं, फिर डैनियल कहते हैं ना मौत पे ही होती है कि फिर ट्रेड पा दो जी, राइट? सो लोग मैंने देखा एक मिड बैंड लिया, अगला फौरन ही ले लिया, और मैं मुर्ताज़ यार रुक जाओ यार, अगला मिड बैंड पहला रिवर्सल लें, फिर अगला ट्रेंड चेंज होने दें। सो unless you guys have any questions online or offline, I think we can wrap this up. And so thank you very much, Steve. Thank you. डे ट्रेडर सर है इस वाले लगा है $27 ਦਾ $25 ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸੇਲ ਆਣ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੋ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਨਿੰਜਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਆਂਟ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੰਥਲੀ ਫੀ ਈਏ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 25 ਦੇਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ नहीं फिर पीए दी देने, लेकिन ये दे है जी। मंडे को ऑफिस खुला है जी, मंडे वी आर ओपन, ये भी खुला वो भी खुला, मैं उधर हूँ। तो मार्केट तो मूव होगी ना, तो यूएस मार्केट so